So there used to be PYQs, right? There used to be PYQs from mountain. So if I see, I saw in 2021 there was a PYQ related to Western Ghat, Nilgiri, Aravalli Range, Satpura Range. That means we need to focus on ranges as well as the mountains. So in the mountain peak, Dodabetta Peak, Dhupgarh, Guru Shikhar, Anaimudi. So today, while while we will be doing the peninsular part, right? The peninsular different mountain ranges. This question was based on the peninsular part, not on the Himalayan range, right? तो हिमालय वाला काली आमे देखि देइतले तो आज आमे देखिबा पेनिनसुलर पार्ट आ वर्ल्ड रो किछि माउंटेन रीजन्स राइट बिकॉज़ वर्ल्ड रो जदि तमे देखिबो गोटे कोठ गोटे appalachian दिस इज द appalachian राइट appalachian mountain range से विषय भी कोट क्वेश्चन आसुची OPSC pre रे ओके let's try to solve this question. Before that, let's try to go to the concept, right? कि सबरो concept हमें देखना okay first of all the first state that I am trying to do today is Madhya Pradesh. Now Madhya Pradesh रो दीटा रेंज गोटे होची सतपुरा रेंज आ गोटे विंध्याचल रेंज ओके दीटा रेंज गोटे होची सतपुरा रेंज आ गोटे विंध्याचल रेंज तो सतपुरा रेंज तरे अछि एंड विंध्याचल रेंज जोटा सेटा ऊपर अछि सो ता मझिरे गोटे रिवर फ्लो करूची द नेम ऑफ द रिवर इज नर्मदा इज दैट क्लियर सतपुरा रेंज विंध्याचल रेंज मझिरे गोटे रिवर फ्लो करूची नेम होची नर्मदा नाउ विंध्याचल रेंज इज वेरी सिंपल बट इफ आई कम टू सतपुरा रेंज देयर आर मल्टीपल peaks actually so सतपुरा रेंज को से माने तीनटा भाग रे डिवाइड करते जंदी so वेस्टर्न साइड गोटे सेंट्रल साइड गोटे और ईस्टर्न साइड दैट मींस मु ए पोर्शन टा कहूती ईस्टर्न साइड मझिटा होची सेंट्रल साइड आउ लेफ्ट वेस्टर्न साइड ओके बिकॉज़ मध्य प्रदेश इज टू एलोंगेटेड राइट तो बर्तन जदी तुमको कहबे कि मु ईस्टर्न साइड रे तार रेंज रो नाम होची मैकाला मैकाल रेंज ओके कोन मैकाल देन जदी मु कहबे कि सेंट्रल इट इज महादेव and western it is called Rajpipla. Is that clear? Maikal range, Mahadev range and Rajpipla range. Hope it is clear, right? Maikal, Mahadev, Rajpipla. Okay. Then बर्तमान जदि सेही थिरे देखिबे कि मैकाल रेंज जो पूरा ईस्टर्न पार्ट रे जति कि पहाड़ गुड़ा अछि तार जदि मो कहबे कि शिखर गुड़ा देन सेथिरे गोटे हिल आस जिवो जोटा कि तमे कहउछ कि समथिंग कॉल्ड am I audible? I'm not able to see my screen. My screen is visible. Yes, sir. Okay. So next my point is जदि मु जिबी कोठी की ना मैकाल रेंज तो एठी मु पढिबी अमरकंटक रेंज कोन अमरकंटक हिल ओके मैकाल रे मु कोन करबी ना मु कनेक्ट करबी ताको अमरकंटक सहित देन जदि मु सेंट्रल को आसीबी जोटा कि महादेव तो महादेव सहित मु कोन पढिबी ना धूपगढ़ पढिबी कोन पढिबी सर धूपगढ़ ओके देन जदि मु कहबी कि मु आसी जिबी राजपीपला को तो राजपीपला सहित मु पढिबी असीरगढ़ ओके तो जदि मु सिंपली आउ गोटे मैप बनेली कि लेट सपोज दिस इज माय सतपुरा रेंज तो सतपुरा रेंज को मु फास्ट तीन भाग रे डिवाइड कर देबी वेस्टर्न सेंट्रल एंड ईस्टर्न ईस्टर्न रे मु कोन कहली आना मैकाल मझिटा होची महादेव लास्ट होची राजपीपला एति मन रहइबो मैकाल सहित मु गोटे माउंटेन करछि दैट नेम इज अमरकंटक महादेव सहित मु कहउछि धूपगढ़ and Rajpipla सहित मु कहउछि असीरगढ़ एनी डाउट टिल नाउ से एतिकी ही अछि आ बाकी जस्ट कैमूर रेंज गोटे जस्ट विंध्याचल रे गोटी अछि दैट्स कॉल्ड कैमूर होप इट इज क्लियर डन okay so if I'm what I am saying is if I'll draw here I am drawing this is my Vindhyachal this is my Satpura range and there is a river system right so there is a river system in between this that is called this is a Narmada. Now the question will be between Satpura and Vindhyachal what is the name of the river which is flowing and that river is flowing from eastern to western side right ki western side se jai ki koti paduchi na Arabian side. Now the answer will be Narmada. Any doubt? Narmada flows between Vindhyachal and Satpura. Fine. Now the next question will be if I will try to divide Satpura between three parts, the extreme right side I am saying it as easternmost, centralmost and westernmost. Now I will put A here, B here and C here. Now you tell me if I want to mark Dhupgarh, where I have to mark it? Sir B. B. If I have to mark
Asirgarh, where I have to mark? C. Amarkantak, A. Rajpipla, C. C. Mahadev, B. B. Maikal, A. and the last one is somewhere here. That's name is Kaimur. Okay, that is in Vindhyanchal. So Vindhyanchal ro gote पर्वत आमे ता ना कहूचे कैमूर आ सतपुरा रे आमे देखिले छटा ना गोटे होची मैकाल रेंज देन मिडिल रे होची तमरो महादेव पूरा लेफ्ट रे होची राजपीपला जदि कहबी कि मैकाल रो देन अमरकंटक महादेव रो धूपगढ़ एंड राजपीपला रो असिरगढ़ दैट्स इट डन एंड कैमूर एतिकी हे जिवो मध्य प्रदेश एनी डाउट इन मध्य प्रदेश होप इट इज क्लियर ओके नेक्स्ट विल गो टू महाराष्ट्र ओके तो महाराष्ट्र में जो जी फास्ट मत पूरा मु मध्य प्रदेश पटु आसिली ठीक अच्छे तो मत फास्ट मिलला कौन ना गाविलगढ़ जमी धूपगढ़ थी असिरगढ़ थी से भाया मत आउ गोटे नाम मन रखा पड़ो कौन ना गाविलगढ़ 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 ओके गाविलगढ़ देन टिके मु जदि तलू को आसिली देन मत कौन मिलला अजंता तो गाविलगढ़ अजंता टिके आउ टिके तलू को आसिली मत मिलला सतमाला वेरी इंपोर्टेंट इट इज नॉट सतपुरा इट इज सतमाला दैट मीन्स गाविलगढ़ अजंता एंड सतमाला ठीक अच्छे गैस रे मु मन रखिदेवी हम गाविलगढ़ अजंता सतमाला देन टिके जदि मु ऊपर को गली देन मते मिलबो कलसुबाई व्हिच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ महाराष्ट्र दैट्स नेम इज कलसुबाई कलसुबाई देन टिके जदि मु आउ तळु को आसीबी सी रो तळु को आसीबी देन मते मिलबो हरिश्चंद्र राजा हरिश्चंद्र करेक्ट कलसुबाई देन हरिश्चंद्र आउ टिके तळु को आसीबी एठी सब घाट भलिया थाल घाट गोर घाट वर्ड सुनथला ना तो एठी सब घाट मिलबो माल घाट भी पड़िया जतळे हमें नेशनल पार्क वगैरह करबा सेतळे हमहु माल घाट बढ़िया वगैरह भी पड़िया पड़ियो ओके तो एठी कोन मालटा मिलला ना घाट दैट्स नेम इज बालाघाट ओके कोन ता ना बालाघाट एंड आउ गोटे लास्ट होची महादेवेश्वर जदि एठी में देखिए महाबलेश्वर नॉट महादेवेश्वर महाबलेश्वर ओके महाबलेश्वर ओके आई विल डू द मैपिंग कि फर्स्ट एठी तो मोर सला मु जदि कहबी कि भाई मते अमरकंटक ओडिसा रो समाव मते जण नै कि छाड़ देला अमरकंटक रे देन अमरकंटक रो मु कहबी कि मते पूरा सतपुरा रेंज को पार करके देन मते गाविलगढ़ को आसेरा तो मु कोन कोन क्रॉस करी फर्स्ट अमरकंटक देन आई विल कम टू व्हिच रेंज महादेव तो सेठी धूपगढ़ देखिबी देन तार एपट को आसले राजपीपला सेठी कोन देखिबी Asirgarh. असिरगढ़ देन आई विल कम टू गाविलगढ़ गाविलगढ़ टू आई विल कम टू Ajanta. अजंता टू आई विल कम टू सतमाला सतमाला देन आई विल गो टॉप कलसुबाई हरिश्चंद्र राइट कलसुबाई पर हरिश्चंद्र देन बालघाट तापर महाबलेश्वर so I am putting some point now A B C D A B C now if the question will come Ajanta B if the question will come related to Harishchandra A okay if question comes related to Gavilgarh A Mahabaleshwar C. Kalsubai D right okay that's done now so Maharashtra any doubt so Madhya Pradesh and Maharashtra okay fine okay now question is comet Uttarakhand okay. Now the question is Satmala Maharashtra okay Maharashtra Amarkantak A so generally Amarkantak को तमे छत्तीसगढ़ रेंज रे पड़ियो okay because that is a Maikal range तो Amarkantak ए छत्तीसगढ़ आ मध्य प्रदेश बॉर्डर रे आजियो so Amarkantak okay but हाँ
अमरगढ़ बर्तन पाइन आम मार्छु मध्य प्रदेश ठीक अछि देन कलसु भाई B. B. गौरी शंकर C. B. Sir, B. कांचनजंगा A. A. महाबलेश्वर B. B. असीरगढ़ A. कैमूर A. Comrades. A. कैमूर is right Bindanchal fine any doubt data set done next is okay next is Karnataka okay so Karnataka also very simple one is Baba Budan what is the name is Baba Budan then there is Mulayam Giri Baba Budan, Mulayam Giri. Then there is Kudremukh and there is Brahmagiri. तो ब्रह्मगिरी रू किए बाहर ना कावेरी ओके तो मुलायम गिरी होची कर्नाटक रो सबटु हाईएस्ट पीक तो बाबा बुडान मुलायम गिरी देन कुद्रेमुख देन ब्रह्मगिरी होप इट इज क्लियर okay Baba Budan Mulayam Giri Kudremukh and Brahmagiri so I am pointing again here 1 2 3 4 so 1 2 3 4 now if the question will be so one is Baba Budan two is Mulayam Giri then Kudremukh then Brahmagiri as ke na tomara Kaveri anyway so what is Mulayam Giri 2. 13. 2 Baba Budan 1. 1. okay Brahmagiri 4. okay Mahabaleshwar B. B. so Karnataka is done now coming to Tamil Nadu so Tamil Nadu is little bit tricky but we will try to see all the mountains okay so the important dekhibo then there are something called Dodabetta is the highest peak of Tamil Nadu which is present in Nilgiri so question is कि भाई Dodabetta highest peak जोटा सेटा को mountain range so the answer is Nilgiri is that clear okay then next is Annamalai hill जोटा कि आमे अनाईमुड़ी जोटा कि केरला रे अछि and this is the highest peak of peninsular or western घाट रो highest peak किए अनाईमुड़ी fine जोटा अछि केरला और तमिलनाडु रो बॉर्डर रे अन्नामलाई सो बेसिकली हमको मन रखे अछि नाक एनएसी नीलगिरी अन्नामलाई हिल्स एंड कार्डमम हिल नीलगिरी गोटे रेंज जेमती हमें विंध्याचल और सतपुरा देखितले ना तो सेमती नीलगिरी गोटे रेंज देन अन्नामलाई हिल गोटे सेटा होची गोटे रेंज जोथरे अनाईमुड़ी अछि देन कार्डमम गोटे हिल होची सेथरे कार्डमम रेंज गोटे ठीक अछि तो ए तीनटा होची कोठी ना केरला और तमिलनाडु रो बॉर्डर रे आसी ठीक अछि केरला और तमिलनाडु रो बॉर्डर एन ए सी नीलगिरी अन्नामलाई कार्डमम हबो नीलगिरी रे आसी दोदाबेटा अन्नामलाई रे आसी अनाईमुड़ी and cardamom hoji seta the last question jibo to anaimudi is the highest peak of western ghat and nilgiri jota nilgiri highest peak dodata peak fine fine next Tamil Nadu okay so Tamil Nadu ro kon achi na first hoji jo this is the first one that is called Zawadi okay Zawadi Jinji so mo ticket just lekhi dedili JG SP Palini Siru Viru and Augusta Malai ki anyway whatever way you want to remember you remember but you have to know that okay Zawadi Jinji Tamil Nadu Zawadi Jinji J for Zawadi G for Jinji S for Sivaroy Zawadi Jinji then Sivaroy SP for Palini sorry this is Panchamarai then there will be Palini okay P for SP S for Sivaroy P for Panchmarahi or Panchmalai jaha bhi thi already okay Panchmalai then there is Palini okay J G S P Palini okay J for Javadi G for Jinji S for Sivaroy P for Panchmarai then E for Palini then Sirumalai and version okay so if I see then there is Sirumalai okay E is Sirumalai F is Palini fine this is Palini Sirumalai and version okay Siru
Viru. So Sirumalai and Varshand. Okay, Varshand. Then last goes Augusta Malai. Okay, simple. If I will try to draw here, I will plot here. Okay, first of all, we studied three things. One is N, one is A, one is C. This is clear. Nilgiri, Annamalai, and Kadamam. Then if I'll come to completely to the Tamil Nadu portion, give me a second. Huh? There are some rails in there. Hope I am audible, right? Okay. So I was saying, first one is J for Jinji, right? So J for J for Javadi, then G for Jinji, then S for Sivroy, P for Panchmalai, then P for Palini, then Sivroy, right? Sirumalai. Sorry, Sirumalai, then Version and Augusta Malai. So I am putting 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and this is N, this is A, this is C. Hope it is clear. So if I will say, what is 6? Palini. No, no. 6. Sirumalai, right? Okay. See, a part support tikke hai, but I am saying J for Javadi, G for Jinji, then S for Sivroy, P for Panchmalai, then I am saying Palini, then Sirumalai, then Varshan, then Augusta Malai. ହେଇଯିବ ঠিক আছে fine okay NAC and Jinji Javadi Sivroy हेलो सर सर सिरुमलाई करे सर कौन कहले Sirumalai ପରେ version VARSANDH version. Okay, so Sirumalai, version, then Augusta Malai. That's it. Now let's do a quick mapping of these western sites. Okay, so I'm writing A here, B here, C here, then this is N, this is A, this is C, and D here. Okay, এদিকে তাজি কলে. So button first question, if I am saying something related to Kalsubai. B. सर बी Okay, Sivroy, D. डी Nilgiri. एन N. Okay, Dodabetta Peak, N. Anaimudi, ए A. Baba Budan Hill, C. Balaghat, Kerala. Balaghat, Sabi, Maharashtra. Sajman. Asirgarh, A. ए सर Javadi, डी D. D. Gavilgarh, B. बी Mulayamgiri, सी C. C. Kadamam, C. सी Mahabaleshwar, A. बी B, Mahabaleshwar B, B. Brahmagiri. C. Okay, Maikal, A. A. ए Kaimur, Kaimur. ए A. Varshand. D. D. I think now you're good, right? In a good set. Fine. The next one is related to Andhra Pradesh. Okay. So when I'll come to Andhra Pradesh, I'll do the sequence. One is, if you'll see from the top, Aruya Kunda, Araya, jahan bhi tame pahuncha. Aruya Kunda. So Aruya Kunda. Then Nala Malai. There was Anna Malai, right? But here is Nala Malai. So Arawa Kunda, Nala Malai, then Veli Konda. Konda what a tribe be. Andhra Pradesh रे भी सेटा पर मने रखे रहा कि Konda tribe. Okay.
So Arvakonda, Nalamalai, Velikonda, then Palakonda, then Sheshachalam. Sheshachalam is related to that Tirupati area. Okay. The first one is Arvakonda. Arvakonda. Then the next one is related to your Nalamalai. Nalamalai. Then the next one is Velikunda, Velikunda, Veli, Veli. So Arva and Velikonda. This is a Palakonda. Palakonda. And the last one is Sisachalam. Any doubt? Total 5. Abba? So sequence is ANVPS. ANVPS. Okay. ANVPS. So first is Arvakonda, Nallamalai, Velikonda, Palakonda, Sisachalam. Done? Car doubt ଅଛି ପାଞ୍ଚଟାରେ ଓକେ କାଲି ଯଦି ଜାୱାଡି ଆସିବ ଦେନ୍ ମୁଁ ତାକୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ମାରିବି या ତାମିଲନାଡୁରେ ମାରିବି ତାମିଲନାଡୁ ସୀମାଚଲମ ଯଦି ଆସିଲା ଶେଷାଚଲମ୍ ସାର୍ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ करेक्ट बट सीमाचलम एठी ମୁଁ कवर करनी सीमाचलम तमरा विशाखापट्टनम पाखा पाखी आसीबा दिस इज सीसाचलम ओके सीमाचलम सेटा भी गोटे माउंटेन ऑफ कि माउंटेन वाला सेठी भी गोटे नृसिंह भगवान का टेंपल है बट सीसाचलम इज रिलेटेड टू तिरुपति नॉट सीमाचलम आर यू गेटिंग सम बैकग्राउंड नॉइज वर्षा होची वर्षार कुछ नॉइज आछे No, sir. then this iPad is good actually noise cancellation facility is already there fine so Arvakonda, Nalakonda, Velikonda, Palakonda, Sisachalam. Done. Any doubt in Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra? We are good, right? Then the next is Odisha. Okay. From Odisha perspective, we have to do a little bit deeper. I didn't do, but maybe I will do a little bit deeper of the mountain ranges. Okay. कि कोठी कोठी छोटे छोटे माउंटेन जोड़ा अछि सेगुडा भी कवर कर देबे बट मोर सेतेबेले जेतेबेले मु पढितली इंडियन ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव ओडिसा रा त मु इक्विपमेंट पढितली सो देयर इज वन इज कॉल्ड मलायगिरी ऊपर अछि मलायगिरी देन देयर इज महेंद्रगिरी जोटा कि तळे अछि सो मलय ऊपर महेंद्र तळे इज दैट क्लियर मलायगिरी एंड महेंद्रगिरी ओके देन ऊपर होछि गरजात गरजात पर्वत राइट गरजात हिल्स एंड देयर इज देवडी मुंडा ओके देवडी मुंडा जोटा कोरापुट आडा अछि तो मलायगिरी महेंद्रगिरी गरजात देवडी मुंडा एटलीस्ट ये चारटा तो मन रहबो ठीक अछि तो वर्तमान पई ए चारटा महेंद्रगिरी मलयगिरी गरजात देवडी मुंडा मारिबो कोठी ना ओडिसा कमिंग टू छत्तीसगढ़ देयर इज रामगढ़ हिल रामगढ़ ओके रामगढ़ then there is Bailadila this is also important for mining area Bailadila so Ramgarh Bailadila and Gorlata कौन Gorlata Ramgarh okay Ramgarh like Asirgarh Dhupgarh similarly here ethi out one of Ramgarh then there is Bailadila and Gorlata 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 ठीक अछि हबा and last you बिहार आउ झारखंड रेंज रे राजमहल तो एटा काली भी हमें देखिथिले राजमहल आउ गारो खासी जयंती मझरे गोटे फॉल्ट आसीगला दैट फॉल्ट नेम इज मालदा फॉल्ट डन एनी डाउट आउ किछ गुजरात रो अछि गुजरात रो हमें छाडी दे गुजरात आउ गुजरात रो छोटो छोटो कथा अछि देखि दबा okay fine we'll see that but at least still here any doubt राजस्थान और गुजरात रा आउ तीटा देख दबा तो राजस्थान रे अरावली इज द ओल्डेस्ट जोटा अरावली अछि ठीक अछि एंड इट इज ए रेसिडुअल माउंटेन राइट देन एथिरे जो रॉक सिस्टम गोडा अछि आर्कियन रॉक्स सेथिरे मार्बल ग्रेनाइट सिल्वर लीड जिंक तो अरावली रीजन रे माइनिंग एरिया पय भी सेटा बहुत फेमस सेटा को हमको टिके माइनिंग जेतले करिया सेतले देखिबा देन सेठी सी अरावली रीजन देखि नदी कोन जाउची ना देयर इज लूनी then there is Sabarmati also and Guru Shikhar is the highest peak of which range Aravalli any doubt Aravalli का सबसे highest peak किए ना Guru Shikhar कार डाउट अछि थी डन ओके Aravalli highest peak होची Guru Shikhar mountain range रे हमें तो करतेले and this is a residual mountain now coming to Gujarat there is Mandav hill Madhav Mandav okay so in Gujarat there is Mandav hill
and it is having a radial pattern. What is this radial pattern? Means nadi would empty flow hoto, right? So this is what we call Mandav Hills, and there is Gir Hill and Girnar Hill. Gir, Girnar, and Mandav. These are the three things in Gujarat. G for Gujarat, G for Gir, Girnar, and Madhav. Separate Dwarka bhi achi, right? So Madhav ru Mandav, right? So these are the in Gujarat. Aravali, jota hoche Rajasthan lo. So in total, now we'll go to the PIQ. Now you tell me from the PIQ whether you are able to solve it or not. The question is, don't go to options. Before going to options, just try to solve it from the question itself. Doda topic, ମୁଁ ଏଟାକୁ ପଢିଥିଲି ନେଲଗିରରେ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଦୋଦା topic କୁ ମୁଁ ମାରିବି ନେଲଗିରରେ. ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଧୂପଗଡ଼, ଆକୁ ମୁଁ କୋଉଠି ପଢିଥିଲି? Sir, Pura Satpura. Mahato. And this is in eastern or western or central? Sir, middle question. Central. Mahadev. Central. Central. ମହାଦେବ ରେଞ୍ଜ ର ଧୂପଗଡ଼. ତ ଧୂପଗଡ଼ କୁ ମୁଁ ତାହେଲେ ମାରିବି କୋଉଥିରେ ନା ସତପୁରା ରେଞ୍ଜ ରେ. ତ ଦେନ୍ ଗୁରୁ ଶିଖର ଜଷ୍ଟ ଏବେ କହିଲେ Sir, Arab. Aravali. ଆରାବଲି, ଭେରି ନାଇସ୍. ଆଣ୍ଡ ଅନାଇମୁଡି Western Ghat. Western. western ghat ର biggest peak, right? Now just see 1 ର 2, then 2 ର 4. 1 ର 2, this is wrong. 1 ର 2, 1 ର 2, 1 ର 2, 2 ର 4, 2 ର 4, 2 ର 3. Done. So this would be answer. Any doubt? Fine. With mountain, the ranges and its highest peak. That was one of the questions. Hope it is clear. Any doubt in mountain? Now let's try to do a combine of all the mountains of the India. Okay. I'm giving now. This is so here I didn't discuss any kind of mountain, right? This is plain area. This is plain area. Uh, West Bengal we I didn't discuss. Only Bihar, Jharkhand road Rajmahal mountain range, right? So seta gota ଆମେ just ଦେଖିଥିଲେ. ଆଉ ନହେଲେ ଏଠିକୁ ମୁଁ ଦଉଛି, let's suppose this is C, this is D, and Andhra Pradesh, Telangana to ସେତେବେଳେ ନଥିଲା, but Andhra Pradesh ମୁଁ ଦଉଛି A, Odisha B, Chhattisgarh C, and this is combiningly D. And ଆଉ ସବୁ ତ ମୁଁ ଦେଖା ହଉଛି, right? ଠିକ ଅଛି, ଚलो. So this is the final one, and ଏତିକିରେ ଯେତିକି mountain ହେଇଯିବ done. And we are not going to cover these mountain ranges further. Like you have to just do a revision whenever you want. Now this is again a revision only, right? So basically compare ବର୍ତ୍ତମାନ total ସବୁ ଜାଣିଗଲ, ନା ଗୁଡା ବି ଶୁଣିଦେଲ. Now the question will be rapid fire round. Now you have to give in the chat box, okay? କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରେ କହିବି, then chat box ରେ ତମେ କହିବେ ଚାଲିବ. ଚलो. First my question is related to Palakonda. Okay, very nice. Zinji. Zinji. Okay. Baba Budan. Okay. Baba Budan, Karnataka. Very nice. Lotse. 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 Lotse mountain. Lotse. Mount Lotse. Okay. Nepal. Dhupgarh. Hmm. Sishachalam. Sishachalam. Brahmagiri. Okay. Restaurants are good. Brahmagiri, Karnataka. Okay. Then Ramgarh. Ramgarh. Nice. Chhattisgarh. Sorry. Then Deori Munda. Deori Munda. Deori Munda. Deori Munda. Odisha. What about others? Odisha. Okay. 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 Palini. Palini, Sibaroy, Varchand, Agasthamalai. Okay. Good. Then if I'll talk about Kalsubai.
Okay, Maharashtra, very nice. Funkui, 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 Funkui. Manipur, Mizoram, what about others? Nagaland, Assam, Pura Northeast. It's Mizoram, right? Funkui, Lusai, Mizo Hills, all are in Mizo. Okay. Then Godwin Austin, Godwin Austin, Godwin Austin. Also Ladakh, A, Godwin K2, K2, that is K2, that will be in A, instead of Jammu, it will be in Ladakh. Then if I'll say Nagatibba, Mandav, Mandav is Mandav, Mandav. Okay. Kaimur, Gavilgad, Rajmahal, Jharkhand. Okay. Jharkhand and Bihar region, fine. Then Mahendragiri, Odisha, very nice. Gorlata, Velikonda, Velikonda, Velikonda. Okay. Gir Girnath, Bedling Save. Okay. Dafla, Miri, Mismi, Abor, Arunachal Pradesh. Okay. Kanchanjunga, Rajpipla, Balaghat, Guru Sikhar, Rajasthan, Maharashtra, Rajasthan. Okay. Guru Sikhar in Rajasthan. Okay. Then Anaimudi, August Malai, August Malai. Okay. Any doubt in mountains? Hope we are good. Mountain of kind of doubt ଅଛି. Indian mountains. Indian mountain, any doubt? Okay. So that is overall for Indian mountains. We did a discussion on Himalayan range. Then we came towards peninsular part, right? The peninsular part is the mountain and central India mountain. The next one is let's go to the mountain for a different continent, right? So Indian geography perspective जो mountain थिला ସେଥିରୁ ଆମେ question करदेले, but if you see in PIQ, right? Again I will go to the PIQ. So this question we solved. So I will mark it as solved. Done. Then coming to this, okay. So what they are focusing on OPSC 2021 ପ୍ରିଲିମ୍ ରେ ଯଦି ତମେ ଦେଖିବ ତ ସେମାନେ ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ୱାର୍ଲଡ ର पेनिनसुला ऊपर क्वेश्चन, प्लाटियो ऊपर क्वेश्चन एंड बेसिन्स रिवर बेसिन ऊपर क्वेश्चन. तो वर्ल्ड मैपिंग रे हमको जदी देखियार अछि ग्रासलैंड देखियार अछि, पेनिनसुला पार्ट देखियार अछि, कोठी पेनिनसुला कोन अछि, लाइक युकांटर पेनिनसुला से माने पचार देथिले, राइट. सो प्लाटियो देखियार अछि, लाइक ओजार प्लाटियो से माने पचार थिले, एंड
बेसिन देखियार अछि काटांगा बेसिन राइट जोटा कि तमरा अफ्रीका रे अछि तो ओके से गुडा हम देखिबा देन सारे माउंटेन्स पचार छथि अपालेशियन माउंटेन की तार से पचार छथि कि व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द अपालेशियन माउंटेन whether it is Mitchell, Elward, Damawand or Elbrus that we have to see okay so Appalachian mountain फास्ट कथा होची कॉन्टिनेंट जानियार अछि देन कॉन्टिनेंट जान चलला परे तार हाईएस्ट पीक कोन सेटा देखियार अछि होप इट इज क्लियर राइट okay so now I am moving to वर्ल्ड रो माउंटेन रीजन राइट वर्ल्ड रो माउंटेन रीजन को जतले मु जाउची वेयर इज माय ओके सो फर्स्ट आई एम ट्राइंग टू डू फ्रॉम साउथ अमेरिका पर्सपेक्टिव वेरी सिंपल कि साउथ अमेरिका रो जतले मु जिबी मते दीटा माउंटेन जोटा कि चिली आ अर्जेंटीना मझे मिलिबो कोन ना गोटे होची अकानकागुआ आ गोटे होची ओजास दे सालेंडो मने रहइबो अकानकागुआ एंड ओजास दे सालेंडो हबो अकानकागुआ ओजास दे सालेंडो नाउ coming to Aconcagua, it is having some volcano. Today we will discuss volcano also as a theoretical question. So Aconcagua, जो volcano देखा that volcano is considered to be extinct volcano. See, there are three types. One is extinct, one is dormant, and one is active. Extinct माने ना पूर्वरु होउथिला किंतु आउ होउ ही नै तो काली हेई नथिला कि आजि होउनी कि कागु को भी हबन दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एक्सटिंक्ट डॉर्मेंट मींस आगुरु हेइची बट एबे आउ होउनी बट फ्यूचर रे जणा नै फ्यूचर रे हेई पारे दैट इज व्हाट डॉर्मेंट एंड एक्टिव मींस आगुरु होउथिला आजि होउची आगु को भी हबो दैट इज व्हाट एक्टिव नाउ Aconcagua is extinct volcano then there is Ozas de Salando it is called active volcano any doubt in Ozas de Salando Aconcagua चिली आउ अर्जेंटीना मझे दीटा माउंटेन कहला गोटे होची अकानकागुआ आ गोटे होची ओजास दे सालांडो होप इट इज क्लियर राइट देन आई एम गोइंग लिटिल बिट अहेड मु बता दिबी कोठी ना दिस इज माय चिली दिस इज नाउ इज पेरू तो पेरू रे दीटा गोटे होची हुआसेरेन आ गोटे होची मिस्टी ओके गोटे होची हुआसेरेन आ गोटे होची मिस्टी सो टू माउंटेन्स वन इज मिस्टी okay one is misty and another one is huaseren okay गोटे थिला मु कोन कहली गोटे थिला तमर मिस्टी आ गोटे होची हुआसेरेन मन रहइबो पेरू रे दीटा गोटे होची हुआसेरेन आ गोटे होची मिस्टी देन टिके जदि मु ऊपर को जिबी देन मते मिलिबो इक्वेडर तो इक्वेडर रे मते कोन मिलुची ना इक्वेडर रे मते मिलुची कोटपाक्सी आ चिम्बोराजो कोन मिलुची कोटपाक्सी एंड चिम्बोराजो ओके तो आपको मु केमति मन रखली ना चंबल का राजा कट्टापा तो कोटपाक्सी एंड चंबल का राजा चिम्बोराजा ठीक अछि चिम्बोराजा एंड कोटपाक्सी दैट इज इन इक्वेडर टिके ऊपर को जिबी मते सी फॉर कोलंबिया सी भलिया देखा होची सो सी फॉर कोलंबिया कोलंबिया रे मते सी फॉर कोडिलेरा ओके कोडिलेरा ओके सी फॉर कोडिलेरा एति की मते एटलीस्ट मन रखियार अछि कि दीज आर माय माउंटेन्स ओके एंड जदी तमे पूराटा देखिबो ए मुंडरू नै कि तळ जाय ए मुंडरू नै कि तळ जाय या ना कोन व्हाट इज दैट रेंज Andes right Andes पर्वतमाला राइट सो Andes पर्वतमाला रे जदि मु देखिबी मते केतेटा माउंटेन मिलिबो जदि मु जस्ट गोटे रिव्यू करिवि कि ओके इफ आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ समथिंग लाइक दिस देन मु कोन कहली कि मते मिलुची दिस इज द पोर्शन ऑफ Andes तो ए Andes रे जदि मु कहबी कि बर्तन मु पॉइंट बनेली सो दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट दिस इज माय सेकंड पॉइंट सो चिली आउ अर्जेंटीना भितरे देन पेरू रे मु बनेली दीटा पॉइंट देन इक्वेडर रे मु बनेली दीटा पॉइंट एंड Colombia रे बनेली गोटे पॉइंट सो दिस इज माय ए दिस इज बी दिस इज सी दिस इज डी दिस इज ए दिस इज बी दिस इज सी sorry hope it is good now the question is you know what is ABCD right so I am saying this point is nothing but anyone what is the last one Aconcagua. Aconcagua what about this Ojos del Salado. OPSC salad. Ozas de Salando what about this Misty. Misty this one Huaseren. Huacharan this one Chimborazo. Sir, Chimborazo. Chimborazo this one Cotopaxi. Cotopaxi and this one Sir, Cody. Cordillera Cordillera not H Cordillera that is in Colombia
Okay, fine. Now ଏତିକି ତ ମନେ ରହିବ ନା କି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଠିକ ଅଛି just simply ମୁଁ ଏତେ ବି ଫୋକସ୍ କରୁନି କି ତା ଉପରେ ବି ନ ଆସିବି ପାରେ ବିକଜ ଯଦି ଇନ କେସ୍ କାଲି ଆସିଗଲା କି ଭାଇ Cotopaxi it is related to Appalachian mountain, answer is wrong, it is related to Andes mountain range. Is that clear? Okay, so the next one is related to, so this is done. Now coming to Africa mountains. Okay, so Africa रो जदि मु mountains देखबी then first तो मु देखबी कि गोटे अछि Algeria. See, I am expecting that at least you know what are the countries, right, of Africa. So Algeria रे अछि Ahagar. कोन Ahagar. कोन अछि Ahagar. Ahagar. Then there is in Libya and Chad तार मझिरे अछि Tibesti. कोन Tibesti. So गोटा होछि Ahagar, then अछि सेठी कोन Tibesti. And एठी एक्चुअली माउंटेन रेंज कोन अछि ना अटलास माउंटेन रेंज अछि जोटा कि मोरक्को, अल्जेरिया और टुनिशिया. मोरक्को, अल्जेरिया और टुनिशिया देखि कोन अछि सेठी अटलास. काली जदि क्वेश्चन आसी गेला कि भाई अटलास माउंटेन रेंज को कॉन्टिनेंट रे अछि एमिति रहि मु काली रशिया मारिबी या फिर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका मारिबी कोठी अटलास माउंटेन रेंज अफ्रीका. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज सेटा तो माउंटेन रेंज हे गला बट जदि मु कहबी कि अहागार माउंटेन जोटा होची अल्जेरिया रे, देन तिबेस्ती जोटा कि होची तमरो लिबिया आउ चाद रे, देन तमे आउ जदि टिके पळे आसीबो इथियोपिया, इरिट्रिया, जिबूती, राइट. सेठी हम गोटे ट्रायंगल पढिले, राइट, आर्फार ट्रायंगल ता उपाय जोटा कि मु तुमको ऑलरेडी पठेइछि करंट अफेयर थिला सेठी, राइट. सेठी गोटे डनकिल रीजन अछि, राइट, डनकिल डिप्रेशन को आ जाय. तो सेठी गोटे डिप्रेशन क्रिएट होछि एंड काहे कि गोटे न्यूज रे अछि ना एठी गोटे बर्तन फॉल्ट आसुछि कि एठी आ गोटे नुवा सागर तयारी होबार चांसेस अछि. समुद्र गोटे पळे आसीबो माने भी सेपरेट हेबे फ्यूचर रे बिकॉज ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. सेगुडा हमको टिके देखिबार अछि और टिके परे जस्ट मु खाली आफ्रिका टा और यूरोप टा करे दिए. तो जस्ट आमे कोन देखिले कि गोटे होची अल्जेरिया रे अछि हमरा अहागार, ए फॉर अल्जेरिया, ए फॉर अहागार. लिबिया रे अछि तिबेस्ती. देन जदि मु इथियोपिया को आसीबी सेठी मोर अछि माउंट इथियोपिया. इथियोपिया रे माउंट इथियोपिया एंड सेठी गोटे पीक अछि दैट नेम ऑफ द पीक इज रसडाजेन. कोन रसडाजेन जो थ्रू गोटे रिवर आसुती कोन ना रिवर जोटा ताना ताना वगैरह से रीजन देखि गोटे रिवर आसुती ब्लू नेम जोटा मु जेतले रिवर करबी सेतले आमे करबा. बट इथियोपिया रसडाजेन सेटा कोठी अछि ना इथियोपिया रे. ओके, देन जदि मु केनिया को आसीबी देन माउंट केनिया. सो इथियोपिया रे जेमति माउंट इथियोपिया, केनिया रे जेमति माउंट केनिया. देन देयर इज माउंट किलिमंजारो जोटा कि तांजानिया और केनिया रा बॉर्डर. बट Kilimanjaro, mostly I will go for Tanzania. Is that clear? Kilimanjaro, Mount Kilimanjaro, that is in Tanzania. Okay, so आउ कोन अछि ना there is a mountain in South Africa called Drakensberg. कोन सेटा Drakensberg. Then आउ गोटे अछि तमरो कामेरून रे माउंट कैमेरून. तो भाबो तीनटा कंट्री ना रे ही तीनटा माउंटेन. गोटे इथियोपिया पई माउंट इथियोपिया, गोटे केनिया पई माउंट केनिया, कैमेरून पई माउंट कैमेरून. आउ ताने ना केतेटा मन रखियार अछि मते अहागार मन रखियार अछि, ए फॉर अल्जेरिया, ए फॉर अहागार. लिबिया पई मोटे मन रखियार अछि लिबिया और चाद मझरे गोटे माउंटेन अछि जहा ना होछि तिबेस्ती. देन साउथ अफ्रीका रे गोटे मन रखियार अछि डार्केन्सबर्ग. करेक्ट नो डार्केन्सबर्ग जोहान्सबर्ग सेई पाखरे अछि. सो डार्केन्सबर्ग. देन आउ तुमको मन रखियार अछि किलिमंजारो. हबो इज विजिबल, राइट. Let's try. A, B, C, D, A, B, C. A, B, C, D, A, B, C. So this is one. So it got a mountain range, and this is one of the mountain range. Okay. Any doubt? Na kichi podi honi. Okay.
Now my question is, see dita continent of Karachi, dita continent of Batan mo question related to mountain name. So if I will say Ahagar, what you have to write? Please put in the message box. Ahagar. Okay. I'm putting one more. Okay. Now the question is, if I'll say Cotopaxi. Cotopaxi. Equator, B or A? B or A? First, equator तो देखा जाओ तो आधा जना पड़ेगा कि सेटा ही देखा जाओ. Okay, it's B. Okay, then if I'll ask Kilimanjaro. Tanzania, that's A, very nice. If I'll ask Jawadi. Okay, Tanzania. Okay, Tamil Nadu. A, very nice. If I'll ask Mount Cameroon. Mount Cameroon. C for Cameroon. Okay, Cameroon. If I'll ask Aconcagua, Argentina and Chile, Aconcagua. A. Okay. If I'll ask Huasharan. Okay. Peru. But which is it? C or D? D. Okay. Very nice. Then Kadlira. Okay. That is C. That is A. Colombia. Then Darkensburg. South Africa, right? D. Okay, very nice. So hope these two continents are done. Next continent we'll move to Europe. Okay, ticket off, but similarly Europe ta सेमती भी बहुत छोटिया ना बहुत जाकी जुकी ही गछे तो सेतरे बहुत सारा जिंस थाए. But anyway, so first of all Sweden. तो सेथरे गोटे रेंज अछि that is called Jolin. कोना Jolin. काजल Jolin. Okay, KJWAWOLIN Jolin, right? So स्वीडेन रे अछि ज्वालिन तो पूरा नॉर्थ रे तो काली आसे ज्वालिन देन तुमको मारिवार नाही कि भाई हम चलो हमें अफ्रीका रे मारिबो या फिर साउथ अमेरिका रे मारिबो एटलीस्ट अफ्रीका साउथ अमेरिका वाला माउंटेन तो कवर, राइट? सो ज्वालिन इट इज इन स्वीडेन. नाउ आई विल कम टू जर्मनी, राइट? सो जर्मनी रे फर्स्ट गोटे जगह तमे देखो माउंट हर्ज गोटे मिलियो माउंट हर्ज. ओके, माउंट हर्ज तो से पाखरे गोटे नदी जाईसी ता ना हो जे राइन रिवर. ओके, not Rhine River, that is a Weser River. Okay, Mount Horse they go to that is related to Weser River, not Rhine. Rhine is को पटे अछि ना सेटा तमरा जर्मनी और फ्रांस पाखा पाखी अछि. ओके, एनीवे सो हर्ज गोटे फर्स्ट माउंटेन we talked about हर्ज माउंटेन. देन देयर इज ब्लैक फॉरेस्ट गोटे माउंटेन अछि कोन ता ना होजी ब्लैक फॉरेस्ट. तो जर्मनी रो दीटा मन रहला गोटे होजी हर्ज आ गोटे होजी ब्लैक फॉरेस्ट. तो एठी हर्ज तळे जदी टिके देखियो ब्लैक फॉरेस्ट. Any doubt? Germany. Horge and Black Forest. Okay. Then see right को जदि तमे टिके जिवो कोठी की ना फ्रांस को तमो मिलियो वोजे माउंट वोजे हबो हॉर्ज ब्लैक फॉरेस्ट एंड वोजे हबो ना. ओके, डन. देन मु पुनी पळे आसीबी कोठी की ना मु पळे आसीबी फ्रांस को. फ्रांस से मु पढिली वोजे. फ्रांस से आ मु गोटे पढिबी सेंट्रल मैसिव MASSIF central massif. So I am trying to again recollect. First we studied Jolin रो मु जदी तळु आसी मते मिलियो जर्मनी रे मु कोन पढुची ना गोटे हॉर्ज माउंटेन पढुची आ गोटे ब्लैक माउंटेन पढुची. देन टिके मु लेफ्ट को आसीबी सेठी की मु आसीली से फ्रांस मते मिलियो. देन फ्रांस पेरिस से जो इफेल टावर, राइट? सेठी की जीवा पूर्व मते जणा पडला कि गोटे पहाड़ देकी क्रॉस करिया पडुची. से पहाड़ ना होची बोसे. That is done. Then out के मु तळु आसली मु कहली मते स्पेन जीवार अछि तो बाटरे मते मिलला सेंट्रल मैसिव, राइट? सो सेंट्रल मैसिव इज डन. बट फ्रांस और स्पेन रो बॉर्डर रे मते कोन मिलुची पाइरेनीज रेंज. पाइरेनीज और पिरेनीज जहां तुम कहजो पाइरेनीज और पिरेनीज
whatever it may be. So Pyrenees, okay, कहा border रे ना फ्रांस आउ स्पेन रो border रे मते कोन मिलला ना Pyrenees. देन आउ टिके मु टिके तळकु पळे आसी देन मते पेनिनसुला गोटे मिलला कोन ना Iberian Peninsula. So this is a peninsular kind of thing. So if you see this border, right, this one, so this is what we call as Iberian Peninsula. Then आउ टिके जदी सेही स्पेन रे मु देखिबी देन मते गोटे माउंटेन रेंज मिलुची दैट इज नेम इज कॉल्ड Cantabrian. कोन ता ना Cantabrian. So Cantabrian and Iberian Peninsula. एत्ती क्या कहतो मु ताको ट्राई करे मैपिंग करे ना पाई. तो बर्तन मत okay, first I am drawing something here related to Jolene. Okay, so this is my Jolene. Then I am coming to Germany. So this is my Germany, right? So this is my Germany. So एठी मु गोटे पढली Mount Horge. Then this side I studied something related to Mount. Sir, What is the name of that? Black Forest. Forest. Then मु टिके लेफ्ट को आसिले मते एठी कोन मिलियो Vosges. करेक्ट भोज. तो बेसिकली तमर जो राइन रिवर टा ई भोज एंड ब्लैक फॉरेस्ट ई मझिरे बहि जाउची. ओके फाइन. देन इफ आई विल कम लिटिल लेफ्ट मते कोन मिलियो एठी सेंट्रल सेंट्रल. देन एठी कोन मते मिलुची गोटे रेंज Sir, Pyrenees. Pyrenees. देन एठी मते कोन मिलला गोटे माउंटेन रेंज Cantabrian. Okay, Cantabrian. Then एठी मते एटा गोटे पेनिनसुला. What is the name of this peninsula? Iberian Peninsula. Any doubt in Europe? At least एती की तो ही जबो ना. देन मु इटली को आसीबी. तो इटली को आसिया पूर्व आगा फास्ट जर्मनी ने कि फ्रांस ने कि स्पेन जाय मु कवर कर देले. ऊपर आसिली कोठू ना सी मु कहूची तमे माने भी जतले भी रिवाइज करबो ना एई सीक्वेंस रे रिवाइज करे. मु सबले एई सीक्वेंस रे रिवाइज करे देन माउंटेन छाड़ी हबनी न हले छाड़ी हे जेबो. मु एमिति आसी कि देन एमिति जिबी सेमति करबोनी. जहा जेमति पढुछ सेमिति सेही सेम सीक्वेंस रे ही जेबो कि ठीक अछि. मु आसिली नॉर्थ रो मु जानली कि स्वीडन रो गोटे अछि. देन मु जर्मनी को आसिली जर्मनी रे दीटा पढिली. देन टिके लेफ्ट को आसिली. देन मते स्पेन मिलिला. स्पेन रे दीटा पढिली. सॉरी फ्रांस मिलिला. फ्रांस रे दीटा पढिली. देन स्पेन को आसिली. तो एठी मते पाइरेनीज मिलिला एंड कांटाब्रियन मिलिला एंड गोटे आइबेरियन पेनिनसुला मिलिला. देन मु चलिबि कि ओके ताले मु आउ टिके राइट साइड को जाय बर्तन देखे कोन मते मिलुची. तो मु कोठी पळे आसी ना इटली को. तो जतले मु इटली को पळे आसीबी तो मते इटली रे कोन मिलिबो ना इटली पाखरे बहुत मते मिलिबो. ठीक अछि. फास्ट होजी गोटे अपेनाइन गोटे मिलिबो. कोन अपेनाइन सेटा होजी गोटे माउंटेन रेंज जणा पडला अपेनाइन. ठीक अछि. अपेनाइन हबो अपेनाइन माउंटेन रेंज. देन इटली रे मते गोटे मिलुची वर्सुवियस. ताकू मु एमते मन रखले वेरी ओबियस, राइट? वेरी ओबियस कि वर्सुवियस ए दिटा ना मन रहबो ना अपेनाइन और वर्सुवियस इटली. अपेनाइन और वर्सुवियस इटली. देन इटली रो गोटे आइलैंड अछि कॉल्ड सिसिली आइलैंड. ओके तो से सिसिली आइलैंड रे ना माउंट एतना बोली गोटे माउंटेन अछि. कोन हता ना माउंट एतना. आउ गोटे सेठी गोटे लिपारी आइलैंड अछि. लिपारी आइलैंड सिसिली पाखरे गोटे छोटी आइलैंड सेठी गोटे लिपारी आइलैंड अछि. सेठी गोटे माउंटेन अछि कॉल्ड स्ट्रोम्बोली. एगुडा सब वोल्कानो वाला रीजन. ओके माउंट एतना एंड माउंट स्ट्रोम्बोली हबो. इटली रे बर्तन मु कहती चारटा. गोटे तो होची अपेनाइन माउंटेन रेंज. अपेनाइन दिस इज नॉट अपालेशियन नाइदर इट इज आल्प्स. ना एटा अपालेशियन माउंटेन रेंज ना एटा आल्प्स बट इट इज अपेनाइन. बहुत छोटियाटिए सेटा इटली रे रह जाउची. देन वर्सुवियस माउंटेन. देन देयर इज सिसिली आइलैंड रे माउंट एतना. लिपारी आइलैंड रे माउंट स्ट्रोम्बोली हबो. तो मु कोन कहली कि एठी गोटे माउंटेन रेंज दिस इज अपेनाइन. एठी गोटे माउंटेन दैट इज वर्सुवियस. देन सिसिली रे गोटे अछि माउंटेन दैट इज एतना एंड एठी गोटे लिपारी आइलैंड छोटियाटा अछि सेथिरे अछि स्ट्रोम्बोली. हे जीवन एति कि सर एति कला बेलू तो से जावाडी जिंजी से गुडा ही जणा पडनी कोन कोन पडितलु. जावाडी जिंजी अगस्त मलाई पालिनी सिरुमलाई से गुडा ही भूली जाउछु. से गुडा ठीक अछि. ताकू टिके देखिबो राइट कि बाबा बुडान देन मुलायमगिरी कुदरे मुख मने पडुछ ना मने पडुनी. टिके टिके बैक साइड ट्राई करले हे दियो सर. सेटा तो ठीक अछि. एले व्हाट अबाउट अफ्रीका से अल्जेरिया तो मने पडुती ए फॉर ए बट ए फॉर ए से नाटा या मने पडुनी. आहागार भाई आहागार करेक्ट आहागार. ओके देन सर ठीक अछि. सेटा टिके आगु गलु लिबिया ना तो सुनी थिलु चाह सहित बट माउंटेन टा मने पडुनी. व्हाट इज द नेम ऑफ द माउंटेन? Libesti. Libesti. ओके देन गोटे मन पकाओ
आमे गोटे आंध्र प्रदेश रे पांचटा खंडे पढ़िथिले व्हाट आर दोस आंध्र प्रदेश शेषाचलम नलमलाई वेलिकोंडा पालकोंडा और आयरकोंडा फास्ट जोड़ा थे Ayurkonda correct Ayurkonda very nice okay so ANBPS right ANBPS Ayurkonda Nalamalai Velikonda Palakonda and Sishachalam okay fine चलो so what about this बर्तमान जदि मु कहबी कि मु यूरोप रे कोन पढ़ली फर्स्ट कोन पढ़ली जोलिन जोर्डन जर्मन को जर्मन रे कोन मन मिलला हॉर्ज हार्ज ब्लैक फॉरेस्ट ब्लैक फॉरेस्ट वोसेस वोसे मासिव पाइरिनी विनेस कांटाब्रियन ब्रियन आइबेरियन पेनिनसुला इटली को आसिले अपेनाइन तापरे भेसु वर्सुवियस इतना स्ट्रोम्बोली हबो ओके डन द नेक्स्ट आवर इज टिके मु जदी बोस्निया आडे जीबी ओके तब बोस्निया 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 क्रोशिया बोस्निया राइट तब बोस्निया रे मते मिलिबो डिनारिका 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 डिना अमेरिका डिनारिका डिनारिका ओके तो डिनारिका देन जदी मु आउ टिके ग्रीस आडे जीबी मते मिलिबो पिंडुस कोटे हला कोन कहली गोटे होची डिनारिका आ गोटे होची पिंडुस तो डिनारिका मु मारिबी बोस्निया रे पिंडुस मु मारिबी ग्रीस आडे ओके ग्रीस रे ग्रीस एथेंस राइट ग्रीस एथेंस एटी मु मारिबी पिंडुस then this is Balkan range right this is the region where we call it as Balkan range Balkan तो सेठी गोटे Balkan range भी अछि तो Balkan region Balkan range Balkan mountain range okay तो एतिकी तो हे गला then टिके मु जदी ऊपर को जीबी रोमानिया और स्लोवेनिया सेठी मते गोटे मिलियो कार्पाथियन सी ऑलरेडी गोटे कांटाब्रियन तबे पडिलो am I audible सर बाल्कनटा बुल्गारिया ना 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 बुल्गारिया माने गोटे एटा गोटे रेंज टा तो सेटा तमर साइबेरिया रु नै कि बुल्गारिया रीजन ओडा करे सब कवर हे जिवो बाल्कन रेंज ओके नॉट ओनली इन बाल्कन बाल्कन एटा गोटे खाली गोटे सिंपल माउंटेन नो एटा गोटे माउंटेन रेंज ओके तो बाल्कन रेंज तो सेटा मु मारू जे बाल्कन रेंज जोटा कि बाल्कन रीजन ए जो कंट्री गोडा अछि ना एगुडा को काजे बाल्कन रीजन से वर्ल्ड वार पर कथा गोडा सेगुडा केतले वर्ल्ड हिस्ट्री मु केतले जदी नेले फ्यूचर रे देन मु कहबी देन देयर इज समथिंग कॉल्ड कार्पाथियन ओके तो स्लोवाकिया एंड रोमानिया सी स्लोवेनिया एन फॉर एन माने ओसेन रे एन अछि एंड स्लोवेनिया तो स्लोवाकिया और स्लोवेनिया भितरु जदी किए गोटे ओसेन पाखरे अछि से होछि स्लोवेनिया कोन कहली मु स्लोवेनिया एथिरे एन अछि बट एथिरे कोनोसी जगह रे एन नाही तो ओसेन रे एन अछि राइट सो स्लोवेनिया को मु मारिबी नियर टू ओशन एंड स्लोवाकिया को मु मारिबी अवे फ्रॉम ओशन तो स्लोवाकिया और रोमानिया ए भितर जदी मु गोटे रेंज देखिबी से रेंज मते कोन मिलुछि ना कार्पाथियन एतिकी हबो मु कोन कहली गोटे डिनारिका देन मु जदी ग्रीस आडे जीबी मते मिलिबो पिंडुस देन बाल्कन रीजन रे बाल्कन माउंटेन रेंज आ गोटे जदी मु कहबी रोमानिया वगैरह रे सेठी मते मिलुछि कार्पाथियन एतिकी तो हेजिबो ना चारटा ओके देन दैट इज डन देन जदी मु जदी यूएस को सॉरी रशिया को सेठी जो ककासस रेंज अछि ककासस ओके ककासस सेठी अछि माउंट एलब्रस कोन अछि माउंट एलब्रस हबो ककासस रीजन माउंट एलब्रस रशिया बट यूरोप रो पार्ट रे काहे ना एठी गोटे उराल माउंटेन रेंज अछि राइट उराल माउंटेन रेंज सेटा डिवाइड करूची रशिया रो किछि पर्सन को यूरोप रे और रशिया रो किछि पर्सन को एशिया रे दिस इज डन नाउ आउ ताले हमें कोन छाडिले आउ हमें छाडिले आल्प्स तो आल्प्स रीजन जोटा सेटा तमरो स्विट्जरलैंड देकी ऑस्ट्रिया देकी से सब जगह टा को कवर करछि तमरो किए ना आल्प्स आल्प्स जो सी ऑलरेडी हमें गोटे माउंटेन रेंज पढिले बिगर माउंटेन रेंज गोटा कोन थिला गोटे आंडीज पढिथिले जोटा कि तमरो साउथ अमेरिका रे थिला गोटे आल्प्स पढि सॉरी गोटे एटलास पढिले जोटा हम अफ्रीका रे पढिले देन एठी जदी माउंटेन रेंज देखोते एठी सबटु मेजर माउंटेन रेंज रो ना होची आल्प्स तो आल्प्स रे कोन कोन अछि ना गोटा अछि माउंट ब्लैंक कोन माउंट ब्लैंक आ गोटा अछि मारहटन ओके मारहटन माउंटेन रेंज तो ए दीटा अछि तमरो कोथरे ना आल्प्स रे मारहटन एंड माउंट ब्लैंक बर्तमान पूरा यूरोप रो कहानी शेष तो जदी मु कहबी यूरोप रो बर्तमान मु मैपिंग को जिबी तो सिंपल मु बनाउची माउंटेन रोडा ठीक अछि तो टिके देखिने तो फर्स्ट कथा होची एरिया रे मु करली एठी कर देले हंगे नै
जस्ट खाली माइंड रे मैप करू था मु जस्ट सिंबल ट्राई करू ड्रा करिया पे से सिंबल तारो आंसर कोन तमे एटा जानछ सो आई एम पुटिंग ए आई एम पुटिंग बी मने पको था बी माने कोन ठीक अछि आई एम पुटिंग सी सी माने कोन तमे जानछ डी माने कोन तमे जानिछ ए माने कोन तमे जानिछ दिस इज व्हाट आल्सो यू नो दिस इज व्हाट आल्सो यू नो पेनिनसुला मु किछ पकोनी माउंटेन रे then this is what that also you know this is also you know this one you know this one you know this is A this is B this is C this is D this is A and this mountain is B मते कुह जना पडुछ ना पडुनी clear okay shall we start okay now the first question what is what do you have to write for Caucasus mountain range am I audible others Sir, A. okay Caucasus for A very nice if I will say okay I forgot 2-3 things this also A this is B this is C B by eta C by eta okay if I will say Black Forest B, C, sir. C, C C, C, C okay very Black Forest is C this is Black Forest very nice what about Vesuvius B, Italy re. Italy. okay Sorry, sir. what about Balkan C region. this is Balkan right C Balkan region okay what about Cantabrian C, एपटे France, Spain side, France. okay Jolin A, A. Mount Elbrus B, sir. Pindus B, sir, Greece re. B, okay sir. B okay very nice then Stromboli So B, D, sir. sir, Sicily porta. okay Lipari Island okay mane rakhta then Horge Mountain B, sir, B. Germany. okay then Carpathian Mountain Range D, sir, D. okay Alps Mountain Range Alps A, sir. sir, Pyrenees B. B, Apennine A, A, sir, sir. Italy A, Caucasus A. A, sir, Russia, Dinarica A. A, sir, well, okay then Central Massif A, sir. A, sir, France. okay जदि मु कहबी कि GMT तुमको लागुची को माउंटेन ओडा GMT रो बहुत क्लोज थिबे So France रो जो ए mountain भितरु गुड़ाक मते अछंती ना हमरो कह Sir, Central Massif. सेंट्रल मासिफ एंड Vosges थे मेरे से. Vosges right Pyre. Vosges central massive and Vosges right okay what is Manhattan C Manhattan is C what about Mount Blanc B, B Mount Blanc is B
A for Alps. Okay. And Mount Sir, Etna, Mount Blanc. Mount Blanc. Sir, ଆଉ ଗୋଟେ mountain କଣ Mount Blanc ପାଖରେ? Manhattan. सेठी जेतले कोरोना टाइम रे इंडिया रो एक्चुअली जो मैप टा सेटा से माउंटेन रे से माने शो करैतिले कि माउंटेन रे डिस्प्ले करैतिले इंडिया रो मैप टा को प्रोजेक्ट करके लाइटिंग करके. That is what we call Manhattan. Manhattan or Manhattan, something like that. Manhattan or Manhattan. Then Etna, Sicily Islands, it's C. Sir, C, right? Okay. Okay. For South America, you have to mark A. For Africa, you have to mark B. For Europe, you have to mark C. And for India, you have to mark A. Okay. Now the questions. Ki Ahaga B, sir. B, sir. Andes, Algeria. A, sir. Algeria, sir. Aravalli, A. A, sir. Italy. Carpathian, Sir, Europe, C. C. Alps, C, sir. C. Pura, A. Balkan, C. Aconcagua, A, sir. A. Tibesti, B. Pyrenees, C. C. Vindhyachal, A, A, sir. Atlas, C, sir. A. B. B. B, sir. okay. Sayadri, A, A. A. okay. Cotopaxi, A. A. Sagarmatha, A, Nepal. A. Kilimanjaro, B. B. Mount Tanzania. Blanc, C. C. Alps. Drakensberg, B. South Africa. B. okay. August Malai, A, A. Yes, sir. Tamil Nadu. okay. Vesuvius, Italy. C. C. hope that is clear, right? So let's try to go to the question. What was it? Anything related to that they asked? Volcanoes they ask Mars. Okay. Okay, block mountain set the theory ratio, but that is fine. What about others? Landform, Benguela, current, that is Tulbul Jhelum River project, Necroid, stage 1, this system. Okay, hope at least mountain till etika right? Now we'll come to the theory portion. the Atlantis mountain ଟା ସେଇଟା Appalachian ତା ସହିତ ଆମେ discussion କରିବୁ ନା Appalachian ତ ସେଟା ନର୍ଥ ଆମେରିକାରେ ଆସେ ନର୍ଥ ଆମେରିକାକୁ ମୁଁ କରେ ହିଁ ନାହିଁ ଆଲ୍ପସ୍ ଆମେ କରିଛେ ଆଲ୍ପସ୍ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଡିଜ୍ ଆମେ କରିଛେ ଆଟଲାସ୍ କରିଛେ ଆଲ୍ପସ୍ କରିଛେ Appalachian ରକି ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ନର୍ଥ ଆମେରିକା ଆସିବ ଠିକ ଅଛି okay so we'll discuss that tomorrow okay so now coming to this continental drift theory right so next is continental drift theory रो question कौन आस्तिला गोटे question आस्तिला related to sea floor spreading right where is that sea floor spreading drainage system yeah so if you see the question was which of the following issue is not taken into account when discussing the concept of sea floor spreading volcanic activities along mid-oceanic creates distribution of fossils in different continents strips of normal and reverse magnetic field observed in rocks of ocean edge of rocks from the ocean floor anyone knows what is the answer B. okay so answer is B let's discuss because definitely this directly the a question to asibo nahi maybe are related concept as pare so what is the concept then so the concept is first of all when they try to understand ki bhai bartana earth ro jo landform goda achi se landform goda kemti because ame landform re hi charcha korche right once eta sarla mane then amar asibo ki different type of landform so
I will try to see, okay, continental drift theory. Who is the author? Basically, Alfred Wegener. So in 1912, when Alfred Wegener he proposed the theory that earlier the world was like Pangaea and Panthalassa. Okay, what it was? Pangaea and Panthalassa. मिसिकी थिले. This was Pangaea and rest जो भी समुद्र थिला ता ना कौन थिला? Panthalassa. So Pangaea is the continental crust or oceanic crust? continental crust. Continental crust and Panthalassa is oceanic crust. Then धीरे धीरे कौन हला ए माने डिवाइड हेले तो ऊपर पार्टटा अलग हे गला तळ पार्टटा अलग हे गला मझरे कोन पड़ जायसला गोटे समुद्र से समुद्र ना से माने कोन देले ना थेसिस सी ओके सी ऊपरटा हे गला लोरेशिया जोथिरे तमरो अमेरिका आसुची एंड एशिया आसुची आउ यूरोप आसुची सो लोरेशिया अमेरिका यूरोप एंड एशिया लोरेशिया देन तळ पोर्शनटा हे गला साउथ अमेरिका अफ्रीका ये जेटा ऑस्ट्रेलिया वगैरह सेवन सब बेसिक हे गला कोन गोंडवाना इज दैट क्लियर ओके सो आ परे धीरे धीरे से माने जेतले देखले कि वर्तमान सिचुएशन रे भाई सात सातटा कॉन्टिनेंट तो वर्तमान सात सातटा कॉन्टिनेंट आसिले कुआडो करेक्ट एठी तो फास्ट होजी ए माने डिवाइड हे गले आगो फास्ट तो मु कहबी कि जेतले लोरेशिया थिबो तो लोरेशिया रे ए तीनटा थिले एंड ए सब तो गोटे हेकी थिले मझरे थिला तेसीसी वर्तमान ए तीनटा सेपरेट हेले देन ए माने भी तीनटा हेकी सेपरेट हे गले ऑल्दो यूरोप आउ अफ्रीका भितरे सॉरी यूरोप आउ एशिया से माने टिके लागे लागे गछनी बट स्टिल देयर आर समुद्र राइट कि मझरे ओशन वगैरह तो अछि ओके फाइन नाउ कमिंग टू दिस कि से कहले कि ताले प्रपोज से कोन कहले फर्स्ट प्रपोज वाज रिलेटेड टू जिग्स ऑफ इट कहा सहित ना तमर जो दक्षिण अमेरिका अछि एंड एथि तमर सॉरी गोटे होची साउथ अमेरिका एंड एथि तमर कोन अछि अफ्रीका तो से माने कहउछन कि ये जो ब्राजील रो कोस्टा या सहित लिंक थिला ए दिटा को कनेक्टेड थिले सो दिस इज व्हाट वी कॉल जिग्स ऑफ इट ओके सो साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका अफ्रीका रो कोटा ना एक घाना कोस्टा घाना टोबो बेनिन राइट आइबेरिया कोस्ट एगुडा सब एक्चुअली ब्राजील सहित लागि थिला दैट इज व्हाट रिलेटेड टू जिग्स ऑफ इट हु गेव दिस अल्फ्रेड वेगनर एनी डाउट ओके देन व्हाट एक्स्ट्रा ही अंडरस्टूड कि भाई रॉक रो एज जदी मु कहबी कि साउथ अमेरिका रो जो ब्राजील रे मते जो रॉक मिलुकी आउ घाना रे मते जो रॉक मिलुची तार एज भी जदी मु कार्बन डेटिंग मेथड रे जिबी तार एज भी मते सेम ही मिलुची दैट मींस से माने गोटे टाइम रे मिसी की ही थिबे सो दैट इज व्हाट रिलेटेड टू फ्रॉम द रॉक एज आल्सो दे आर सेइंग लाइक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कि कॉन्टिनेंट ओडा तो धीरे धीरे ड्रिफ्ट हो जंदी धीरे धीरे आगु आगु बढ़ु जंदी ओके देन सेडिमेंटरी रॉक्स लाइक टिलाइट्स डिपॉजिट कि आमे अफ्रीका रे जो घाना कोस्ट रे जो गोल्ड मिलुची तार जदी मु कहबी सोर्स से सोर्स मते ब्राजील रे मिलुची दैट मींस somehow कि जदी नदी फदी रु बोही की एटलीस्ट कोन हेतियो कि ब्राजील रो ए पोर्शन ले लेट भाबिनो गोल्ड मिलुथला देन से तो बोही की कर्ण को आस्तियो ए कोन रे घाना लागिथिला बट धीरे धीरे घाना सेपरेट हो जायछि बट घाना पाखरे से सोना मिलुची तो सोना रो जो सोर्स अछि सोना रो जो सोर्स अछि अफ्रीका रो जो गोल्ड जहा मिलुची तार सोर्स कोठी मिलुची ना ब्राजील रे मिलुची दिस इज व्हाट वी कॉल टिलाइट डिपॉजिट एंड द नेक्स्ट वन इज फॉसिल फ्यूल्स कि साउथ अमेरिका रे जो भलिया प्राणी थिले तांकर जो फॉसिल फ्यूल्स बर्तन जो तांकर कंकाळ हे गला या फिर जहां भी तमर को जो टिश्यू वगैरह मिलुची जना पडुची कि अफ्रीका रे जहां अछंदी अमेरिका रे सेया अछंदी एंड एमिति न कि से प्राणी गोडा समुद्र रे माने पहरे की अफ्रीका पळे आस्ते आसी नथिबे दैट मींस से माने कहउछंदी एई चारिटा फैक्टर लागी मोस्ट प्रोबब्ली से माने आगरो मिसी कि थिले जोटा कि हमें कहउछे गोंडवाना रे मिसी कि थिले को माने ना अफ्रीका आउ अमेरिका साउथ अमेरिका देन से माने सेपरेट हे चले बिकॉज़ ऑफ ड्रिफ्टिंग इज दैट क्लियर दिस इज रिलेटेड टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी देन द न्यू theory came up from Arthur Holmes. First was Wegener. Wegener dele continental drift theory. Alfred. A for beginning, right? No. तो beginning रे A वाला आसिले किए ना Alfred Wegener. AW. Next किए आसिले Arthur Holmes. तो से कहले कि भाई there is something called conventional current in atmosphere. Sorry, asthenosphere, not atmosphere. Asthenosphere. तो से कहले कि ठीक अछि तमे जहा कहिलो त से गुडा ठीक अछि. बट तमे त आउ किछि कहि हिलनी कोन कहिलनी ना ड्रॉबैक जदि तमे देखियो टाइडल फोर्स विषय तमे किछि कहिलनी कि पृथ्वी आ चंद्र भितर जो ग्रेविटी अछि से फोर्स द्वारा भी से माने भिड़ा भिड़ी पारु थांदी पाए पोल फ्लिंग फोर्स कि पोल जो अर्थ रोटेशन होची सेथि पई पोल आडू को भी से मानकर मूवमेंट होतबा दरकार तो एगुडा भी तमे किछि कहिलनी देन ऑथर होम्स कहले कोन कि भाई ना ना बिकॉज़ अर्थ आमे ऑलरेडी काली इंटीरियर देखिथिले कि क्रॉस्ड गला पर 100 किलोमीटर पर हमर स्टार्ट कोन होतला एस्थेनोस्फियर हां कि नै एस्थेनोस्फियर मेसोस्फियर एगुडा तो काली देखिथिले तो बिकॉज़ एस्थेनोस्फियर जोटा कि वर्तमान को स्टेट रे अछि सेमी सॉलिड स्टेट रे अछि सॉलिड स्टेट रे नै जेहेतु सेटा गोटे जेली भलिया अछि तो जेली ऊपर जो तमरो रॉक अछि ऑब्वियसली से कंप्लीटली स्टेबल हेकि रहइबो नै गोटे जेली ऊपर तमे गोड़ रख खसी जीवो ना खसी जीवो नै जेली थल थल हो माने तमे भी थल थल हो करेक्ट नो
तो सी कहले कि भाई बिकॉज ऑफ आस्थेनोस्फियर there is a movement, okay, movement of what, crust. So this is related to earthworms कि asthenosphere जो थे कि radioactive element अछंती, because there are radioactive element there are thermal conductivity बहुत हाई जो कि टेम्परेचर बहुत अधिक, जेहेतु टेम्परेचर बहुत अधिक अछि से मानकर मूवमेंट होची, मूवमेंट ऑफ magma होची जो गोटे कन्वेंशनल करंट तयारी होची, कन्वेंशनल करंट तयारी होची। दैट मींस जदि मु asthenosphere नेबी सेथिरे कोन होची, फर्स्ट कथा हला तो asthenosphere कोन अछंती रेडियोएक्टिव एलिमेंट, बिकॉज ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट temperature is too high, because temperature is too high they cannot stay in solid state, से माने मेल्ट हे जिवे, because मेल्ट होचनी तांको टेम्परेचर अछि, दैट मींस गोटे एनर्जी प्रोवाइड होची, से एनर्जी लागी तांको गोटे मूवमेंट भी हबो। तमे जानना पानी नॉर्मली तमे गरम करो, टेम्परेचर नाही, पानी नॉर्मली स्टेबल अछि, टेम्परेचर दियो पानी रे भी मूवमेंट हवा स्टार्ट हबो ना, नाही मॉलिक्यूल गोटा करो जोडा तळु गरम होबे से ऊपर उठिबे ना, उठिबेनी, उठिबे ना। तो सिमिलरली जदि टेम्परेचर अधिक थिबो जो माने अधिक गरम हेबो ओबियसली से माने मूवमेंट स्टार्ट हेजो, तो से मूवमेंट को से माने कहउछनी अपवर्ड मूवमेंट हेले आमे ताको कोन कहउछे ना करंट। तो वर्तमान से आइदर एमिति मूवमेंट हे पारि थांती या फिर दिस इज व्हाट वी कॉल्ड राइजिंग लिम्ब, ओके, जहा को आमे कहउछे डाइवर्जेंस। भाबिनो एठी अर्थ अछि आ भितरे जो आस्थेनोस्फियर अछि से माने एमिति मूवमेंट करिया स्टार्ट करे, एठु किछि पोर्शन एमिति बुलिला एंड एठु किछि पोर्शन एमिति बुलिला, दैट मींस एई ऊपर जो तक सरफेस अछि ए सरफेस तो डिवाइड हे जिवो, होंगी नहीं, दैट मींस द डाइवर्जेंस, right? Now this is what we called what, rising limb, because of the rising limb there is a divergence, so this is what we called sea spread new rock formation. That means एठी जदि गोटे ओशन टे अछि, भाबिनो ओशन तळे ओशेनिक क्रस्ट रे आस्थेनोस्फियर जोटा अछि जदि सी राइजिंग लिम्ब हैला तो सी वर्तमान सेपरेट होचंदी, जो करंट अछि गोटे डाइवर्जेंस क्रिएट करूची। दैट मींस एठी ए जो सी फ्लोर टा थिला ए फ्लोर टा एपट को जाउबो एंड ए फ्लोर टा एपट को जिवो, मझिरे गैप क्रिएट हबो, जो लाभा थिबो से लाभा ऊपर को उठिबो, सेठी बनेबो कोन मिड ओशेनिक रिड्ज, न्यू फॉर्म विल स्प्रेड, न्यू रॉक विल बी फॉर्म एंड द ocean will be spreaded, that's what we call it as ocean, spread of the oceans, हां कि नहीं। then descending limb ना जदी गोटे क्लॉकवाइज आ गोटे एंटी क्लॉकवाइज थिला, जदी गोटे क्लॉकवाइज हला एंड एपटटा जदी एंटी क्लॉकवाइज हला, राइट, देन एमाने कोन करछनी तो ई ऊपर जो पोर्शन ता थिबो ताकू से माने तो कहबे कि भाई तते हमें भीतर को टाणीबू, जदी हमें भीतर को टाणीबू दिस इज व्हाट वी कॉल कन्वर्जेंस, दिस इज व्हाट वी कॉल डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब माने कन्वर्जेंस, एठी क्रिएट कोन हबो ना ट्रेंच क्रिएट हबो, सबडक्शन क्रिएट हबो, एनी डाउट। ट्रेंच माने गर्त तयारी हबो भाई, एठी सब भीतर को पसी जिवे, करेक्ट नो, देन एठी गोटे तमको गोटे हेवी वाला डीप रीजन मिलियो तमको, जोठी ए पोर्शन रे तमको अपलैंड मिलुथला, हाईलैंड मिलुथला, करेक्ट नो। डाइवर्जेंस रे फॉर्मेशन, डाइवर्जेंस इट इज आल्सो कॉल्ड एज कंस्ट्रक्शन जोन, कंस्ट्रक्टिव जोन, हां कि नहीं। डाइवर्जेंस रे कंस्ट्रक्शन हबो बट कन्वर्जेंस रे इट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव मार्जिन। ए जो मार्जिन ता ना, जो मार्जिन रे कन्वर्जेंस हबो से मार्जिन को कोन कहबो डिस्ट्रक्टिव मार्जिन, बिकॉज एठी जो एरिया ता थिला एपट जो एरिया ता थिला से माने भितर को पसिया को चाहउछन, एठी तमरा जदी काली गोटे जदी तमे एठी गोटे जागा टे किनिछ से जागा पळेबो आस्थेनोस्फियर को किनि की रखि दाओ पटा, करेक्ट नो। तो सेठी तमे कोन कहबो सेटा को ना ई जो जागाटा तयारी हला आकु को आजिबो ट्रेंच, आकु को आजिबो सबडक्शन जोन, एनी डाउट क्लियर। जदी काली क्वेश्चन आसिला कि when we are going to have a convergence, the convergence is also called as a destructive margin, is that true? Convergence is also called destructive margin, yes, yes. Convergence is formed due to rising limb, convergence is due to rising limb, Not. okay, this is related to descending limb, okay, nice. So convergence जोठी होउची सेठी मते हाईलैंड क्रिएट हबो, सेठी ट्रेंच हबो एंड सबडक्शन हबो, राइट, ओके। So hope this portion is done, right? Any doubt in this? Fine. So we talked about Alfred Wegener, then we talked about Arthur Holmes जे conventional current विषय रे कहले, then concept of sea floor spreading, ए पन माने sea floor spreading विषय रे कहिनाथि, एई आकु आधार को नेई की बिकॉज ऑफ से जो आस्थेनोस्फियर वाला कांसेप्ट को नेई की देन एठी आसी गले हेरी हेस, की आसिले हेरी हेस, ठीक अछि। से कोन कहले भाई सी फ्लोर स्प्रेडिंग कि देयर इज समथिंग कॉल्ड मिड ओशेनिक रिड्स, कि ठीक अछि सी फ्लोर तमे कहि देलो, तो कहि देलो कि राइजिंग लिम्ब कथा कहलो, डिसेंडिंग लिम्ब कथा कहलो, किंतु आर्थर होम्स से केवल कन्वेंशनल करंट कथा कहले बट सी फ्लोर स्प्रेडिंग कथा कहले नै, कि ठीक अछि जदी गोटे जगह रे स्प्रेडिंग हैला
ताहले नुआ रॉक फॉर्मेशन केमिति हबो से कथा किछ से कहले से कहले भाई देयर इज आस्थेनोस्फियर रे बहुत मात्रा टेम्परेचर तो से माने करंट होची तो से करंट लागी ऊपर रो क्रस्ट रो मूवमेंट से विषय से किछि कहू ही नथिले तो जेतले हेरी हेस आसिले सेम ए प्रिंसिपल को अप्लाई करी कि से कहले भाई देयर इज समथिंग कॉल्ड सी फ्लोर स्प्रेडिंग कि जदी एठी मोर राइजिंग लिम्ब मिलिला देन एठी तो माने स्प्रेड हेबे कथा होची अर्थ तो एमिति स्प्रेड हेले जदी मु कहबी कि स्प्रेड हला तो अर्थ आहुरी थोड़ी बल्की हे जिवो हबो ही नै जदी एठू स्प्रेड हला दैट मींस एई समुद्रटा जाई कि कोठी ना कोठी तो कॉन्टिनेंट रे लागिथिबो हां कि नै तो एई पोर्शनटा जदी एठी स्प्रेड हला एठी जोटा लागिथिबो सी आउ ताको धकेल माने ताको धक्का देकी भीतर को जाई परिबोनी तो ऑब्वियसली कोन हबो सी डाउनवर्ड मूवमेंट चलिबो तो एई जो मूवमेंट एई जो पोर्शनटा रे एठी कोन हबो ओसेनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट रो कन्वर्जेंस हबो एठी जदी ओसेनिक डाइवर्जेंस होउची हां कि नै एठी कोन हबो कन्वर्जेंस हबो बुझिला ना नै तो बर्तमान मते को सी सिंपल जिंस ना फास्ट कथा होची जदी ए पोर्शनटा देखो ए पोर्शनटा एटा लेट भाबिनी एटा ओशन फ्लोर दीटाको ओसेनिक क्रस्ट एटा ओसेनिक क्रस्ट बिकॉज ऑफ आस्थेनोस्फियर राइजिंग लिम्ब लागी ए दीटाको सेपरेट हेबे जदी सेपरेट हेले एठी स्प्रेड हला ताले एठी गोटे नुवा जगह क्रिएट हला तो ए जगह जदी क्रिएट हला गोटे स्पेस आसिला से स्पेस ता आसिले तो एमिति जदी समस्त डाइवर्ज होबे तो अर्थ ही बढ़ी बढ़ी चलिबो ना तो अर्थ तो बढ़ुनी अर्थ रो शेप तो लिमिटेड दैट मींस ए ओशन क्रॉसटा एठु जदी स्पेस नेला एपटे जहा सहित से लागि कि थिबो का सहित लागि थिबो गोटे कॉन्टिनेंट सहित लागि थिबो हां कि नै यस सर तो सेही कॉन्टिनेंट रे जदी लागि थिबो एई ओशेनिक क्रॉसटा एठी जो पोर्शनटा अछि सेही पोर्शनटा कोन हबो जोटा अधिक ओजन ये कहबो भाई तू हियाडे चले ये कहबो नाइ माही बुझिबिनी तो जे ओजनिया थिबो से भीतर को पळेबो तो जनरली ओजनिया की सियाल और सीमा राइट that means oceanic crust तो oceanic crust भीतर को जीव जदी oceanic crust गला भीतर को एठी भाव कि संतुलन केमति रखा होची देखो इक्विलिब्रियम केमति बनुची कि भाई एठी स्पेस हला माने एठी किछि ना किछि जो अर्थ रो भीतर आस्थेनोस्फियर रे जहा जिंस थिबो सेडा बाहरिबो ना नै एठी मिड ओशेनिक रिड दबो लाभा गोडा बाहर केसियो देन सेटा को फिलअप किए करिवो सेटा को फिलअप ए माने करिवे एठी जो सबडक्शन जोन तयारी हबो एठी जो सेडिमेंट गोडा थिबो गोटे ओशन अछि सॉरी गोटे पहाड़ अछि या फिर गोटे नदी आसी से समुद्र रे मिसिछि राइट तो नदी कोन करथिबो सब सेडिमेंट जोडा धरि के आनी थिबो से सब आनी के समुद्र कूल रे छाडी थिबो एठी कोन हबो सबडक्शन जोन हबो एठी ट्रेन्स तयारी हबो से जो सेडिमेंट गोडा अछि सब सेडिमेंट गोडा जीवो कुआडे आस्थेनोस्फियर को एपटे जहा बाहरिला एपटे तो हे भीतर को हे आई जीवो ना सेति अमाउंट रो हां कि नै आज्ञा सर हाँ सेठी गला देन जदी एठी आहुरी टेम्परेचर अधिक बनिला आ जदी समहाव को गोटे दरार मिली गला क्रैक वाला मिलिला देन से ताकू फटे की बाहरी एठी कोन वोल्कानो बुझिला नै तो वोल्कानो को पटे हबो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पटे हबो जदी गोटे ओशेनिक क्रस्ट आ कॉन्टिनेंट क्रस्ट से माने जदी कन्वर्ट करछोंदी ताले कॉन्टिनेंट रे मते कोन मिलिबो वोल्कानो मिलिया चांसेस अछि फाइन ओके सो हेरी हेस जे थिले सीए कहले कि भाई देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग बिकॉज ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग देयर इज मिड ओशेनिक रिड्स आल्सो तो मिड ओशेनिक रिड्स एठी तो तमरो न्यू रॉक तयारी हला तो यंग रॉक गोडा सब एई जोठी गैप हला ता पाखरे सब तमु को मिलबे यंग रॉक दैट मींस जदी आगुरु एठी गोटे रॉक अछि से रॉक क्वाड हबो से रॉक एई मिड ओशेनिक जो गैप मिलला ताठू से माने दूरे दूरे जिवे दैट मींस जो एरिया रे मोर मिड ओशेनिक रिड्स होची तार मो राइट को जेते आगु जिबी मते सेते नुवा रॉक मिलिबो ना ओल्ड रॉक मिलिबो ओल्ड रॉक मिलिबो तो काली जदी क्वेश्चन आसी गला कि नियर टू द राइजिंग लिम्ब व्हाट काइंड ऑफ रॉक यू विल एक्सपेक्ट यंग रॉक और ओल्ड रॉक नियर टू द न्यू तो नियर टू द राइजिंग लिम्ब माने डाइवर्जेंस होची दैट मींस एटी गोटे मिड ओशेनिक रिड्स हबो तो मिड ओशेनिक रिड्स रे ऑलरेडी सब बेले नुवा रॉक तयारी हबो ताहाले मु जत्ते राइजिंग लिम्ब जोठी अछि ताठू मु जत्ते आगु को चलीबी भाबिनो राइजिंग लिम्ब एठी अछि करेक्ट नो मु जदी आगु को गली याडू को गली मते ओल्ड रॉक बुझियला ना बुझियलानी ओके डन सो जदी मु आहुरी गली कॉन्टिनेंट पाखु मते कोन मिलिबो कॉन्टिनेंट पाखरे मते मिलिबो ट्रेंचेस मिलिबो आ सबडक्शन मिलिबो एंड सेगुडा मोस्टली मते ओल्ड रॉक वाला पैटर्न मिलिबो राइट एनीवे आउ एथिरे से माने कोन देखिले हेरी हेसे कहले कि भाई एपट को से माने जति की डिस्टेंस गले जदी मु एपटे 100 किलोमीटर गली एपट को भी जदी 100 किलोमीटर गली ताले ए दी टांगरे जो रॉक मिलुची तार एज भी समान दैट मींस एट वन टाइम से माने भी एठू ही तयारी हेतिबे हां कि नै
एठी तयारी हेले हठात किना जଣା पड़ला कि एठू पुणी फाटी गला पर ये अधा हे गला डिवाइड हे गले राइट एपटे अधा थिला एपटे अधा थिला हठात किना सेही एरिया रे पुणी वर्तमान बिकॉज राइजिंग लिम्ब अछि से याकू पेली दबो एपटू याकू पेली दबो अधारु भांगी गले देन धीरे धीरे से दूर हे गले तब 100 वर्ष पर जदि मु एपटू 100 किलोमीटर गले आ एपटू 100 किलोमीटर गले मते तो रॉक रो एज सेम मिलिबो काहे ना से माने गोटिए टाइम रे तयारी हेतिले बुझियो कि ना बुझियो डन एनीवन हैविंग एनी डाउट वीडियो से निकलेट्स okay then he talked something related to the magnetic properties also तो कथा हला कोन ना जदि मु मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखिबी तो एठी जति माने तयारी हेले लेट सपोज मैग्नेटिक रो गोटे मैग्नेट थाय ना कि अर्थ जदि अछि अर्थ रो मैग्नेटिक फील्ड अछि तो लेट सपोज दिस इज नॉर्थ दिस इज साउथ तो जदि मु गोटे मैग्नेट रखिबी देन मैग्नेट रो साउथ पोल अर्थ रो नॉर्थ पोल आडू रहइबो मैग्नेट रो नॉर्थ पोल अर्थ रो साउथ पोल आडू रहइबो तो से माने जेतले चेक कले कि भाई एठी जो सी मैग्नेटिज्म गोटे होची कोन बिकॉज ऑफ द मेटल रो प्रॉपर्टीज नै कि मैग्नेटिज्म तो हमर जो रॉक आसुची जो फॉर्मेशन होची से रॉक रे कोन अछि मिनरल्स अछि हां कि नै because of that mineral it will show also magnetism properties तो magnetism property जेतले गोटे रॉक हैला से रॉक को अगेन से माने ट्राई करछनी तुमको कन्फर्मिटी दवा पाई कि भाई राइट साइड रे जहां मते मिलुची पर्टिकुलर 100 किलोमीटर पर लेफ्ट साइड रे भी 100 किलोमीटर पर मते सेया ही मिलुची दैट मींस मो जदी राइट साइड को 100 किलोमीटर गली जो रॉक मिलिला तार मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी जदी तार नॉर्थ टा ए डायरेक्शन अछि एपटे 100 किलोमीटर गला पर तार भी नॉर्थ डायरेक्शन टा सेही पटुक ही अछि प्लस जदी मु 10 किलोमीटर गली मते गोटे रॉक सिस्टम मिलला गोटे मेडियोसनिक गोटे पहाड़ रो रेंज मिलिला राइट यार मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी जदी से नॉर्थ को देखौची आउ 10 किलोमीटर पर नेक्स्ट जो रीज मते मिलुची तार मते साउथ मिलिबो मींस से माने नॉर्थ साउथ के अलाइन कर दे ठीक अछि बुझिला ना बुझिलानी ये होची रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म वाला प्रॉपर्टी सिंपल जिंस तमे खाली जस्ट जानिया रहछ कि भाई सी प्लस ट्रेडिंग में गोटे मैग्नेटिज्म वाला प्रॉपर्टी भी माने सो करछो जोथरे ए माने गोटे कन्फर्मिटी दोछन कि दिस इज अनदर प्रूफ कि दैट देयर आर mid oceanic grids and it is continuously happening and new rock system is forming inside the ocean okay so magma charged ions because magma रहउचंदी कोथिरे because asthenosphere रे charged ions रहउचंदी जेते अधिक टेंपरेचर सेते आयन गोडा चार्ज रेथिबे साइंस एंड टेक रे मु तुमको एडा ऑलरेडी कहि हिथिले प्लाज्मा जेतले हमें सन रिलेटेड कथा कहउतले स्पेस टेक्नोलॉजी रे एनीवे दिस इज व्हाट नाउ कथा हला कि आउ गोटे थाले ए इपी सेंटर ऑफ फोकस कोन ना जेते बेले मु कहली ना कि एठी जेतले तमरा सी फ्लोर स्प्रेडिंग हला किंतु कॉन्टिनेंट पाखरे तमरा कोन हबो ट्रेंचेस हाउ सबडक्शन हबो दैट मींस गोटे जोटा ओसेनिक क्रस्ट थिबो सेटा भितरु को जिवो भितरु को गला पर से माने आस्थेनोस्फियर को गले दैट मींस आस्थेनोस्फियर रे से गले सेठी से माने बहुत मात्रा टेंपरेचर देन ये गोटे प्रेशर भी क्रिएट करबो से टेंपरेचर और प्रेशर लागि गोटे हेवी प्रेशर क्रिएट हबो जो गोडा कि से माने लिथोस्फियर को भांगिया पय ट्राई करबे बाहर को उठिया पय करेक्ट नो बिकॉज़ ताका बाहर बर्तन थल थल वाला जिंस राइट सेमी सॉलिड वाला से मानको बाहर प्रेशर प्रबल हेलानी से माने ट्राई करछन्ती बाहर को बाहर जिवे किंतु बाहर को बाहरला को एठी कोन करबे क्रैक देखेबे कोउथरे ना लिथोस्फियर रे क्रैक देखाबो जोठी जोठी तांको बाटो मिलिबो से माने उठिया को ट्राई करबे तो ए जो क्रैक हेला माने से क्रैक टा को ही हमें जोठी कहू जे क्रैक स्टार्ट हला दैट इज व्हाट वी कॉल्ड फोकस देन फोकस हवा माने स्टार्ट हे वाला एस आउ पी वेव बुझेला ना बुझेला नहीं देन पूरा फोकस रु पूरा जोटा 90 डिग्री रे आसी कि जोटा अर्थ रो सरफेस को टच करबो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड से पॉइंट को कहा जाय ईपी सेंटर गोटा होची फोकस होची भितरे अर्थ रो ऊपर ई फॉर अर्थ ई फॉर ईपी सेंटर ठीक अछि काली जदी कहबा कि ईपी सेंटर टा सेंटर रे नो आंसर इज रॉन्ग ई फॉर अर्थ ई फॉर ईपी सेंटर ईपी सेंटर होची सरफेस रे फोकस रे होची कोन तमरा ना भितरे फाइन तो पी वेव सबुठ आगे आसी कि डिटेक्ट हिजबो कि भाई पी वेव पळेला बिकॉज़ पी वेव बहुत स्पीडली ट्रैवल करिवो राइट बिटवीन पी एंड एस पी वेव होची बहुत फास्ट एनी डाउट इन दिस ओके नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नाउ क्वेश्चन वाज कि फर्स्ट कथा ला व्हाइल डिस्कस द कांसेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्टडी मते को ऑथर देथिले हेरी हेस राइट ओके नाउ इट इज टॉकिंग अबाउट वोल्केनिक एक्टिविटी मिड ओशनिक ग्रिड्स ठीक अछि हेरी हेस कहिथिले ना कहलथिले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोसिल्स ऑफ डिफरेंट आप किए कहले भाई वेगनर कहथिले अल्फ्रेड वेगनर होंगी नहीं दिस इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हेरियस को संपर्क किछि नथिला सी फ्लोर स्प्रेडिंग जोटा हेरियस कहथिले सी तो एगुडा कहि नथिले कि भाई फोसिल गुडा मिलबे आमे जो फर्स्ट चारटा पॉइंट देखिले वेगनर रिलेटेड सेथिरे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोसिल्स थिला होंगी नहीं ड्रिफ्ट्स ऑफ नॉर्मल एंड रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड मु कहली ना गोटे सी फ्लोर स्प्रेडिंग हला एपट को मु गले जदी मते डायरेक्शन एमिति मिलुची एपट को भी 100 किलोमीटर गले मते डायरेक्शन सेमिति मिलियो देन आउ 10 किलोमीटर गले जदी आउ गोटे मते रीड्स मिलुची रीड्स माउंटेन रीड्स ओके रेंज गोटे तो तार मते अपोजिट डायरेक्शन रे मिलियो दैट्स व्हाट वी कॉल्ड नॉर्मल एंड रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व्ड इन रॉक्स ऑफ ओशन फ्लोर
ओशन फ्लोर रे जो रॉक्स मिलिबो सेथिरे गोटे नॉर्थ आउट टिके बोले साउथ नॉर्थ साउथ रे से माने अलाइन हेकि रहउतबे देन इट इज स्टेबल स्ट्रक्चर नॉर्थ रखियो माने माने ट्राई करिवे दी जन को रिपेल करिया पे तो जनरली से माने स्टेबल रहबे नै एंड एवरीथिंग इन नेचर दे वांट टू गेन स्टेबिलिटी करेक्ट नो खाली नेचर रे नो ह्यूमन बीइंग आल्सो दे वांट टू गेन ए स्टेबिलिटी करेक्ट नो सो समस्त को स्टेबिलिटी रही गेम तो बर्तमान समुद्र मध्य भी जो पहाड़ गुड़ा अच्छे से भीतर भी स्टेबिलिटी रहे नॉर्थ साउथ हेले स्टेबिलिटी ठीक ठाक अच्छी अपोजिट पोल अट्रैक्ट्स बट सेम पोल से माने रिपेल करेंगे राइट एज ऑफ रॉक्स फ्रॉम ओशन फ्लोर हमें सेटा भी देखिले कि भाई जदी एपटू 100 किलोमीटर गली देन एपटे जो एज मिलिबो मते एपटू 100 किलोमीटर गले सेम एज मिलिबो दैट मींस मु एटू कंफर्म कर परिबी कि जेतेबेले से माने तयारी हेतिबे से माने आगो मिसी की ही थिबे तापर बिकॉज ऑफ राइजिंग लीफ से माने मधुरु भांगी जायछन्ती अधा एपटू पळेला अधा सेपटू पळेला जो गैप हला सेठी पुनी गोटे नुवा रॉक तयारी हला बुझेला ना बुझेला नहीं तो ए कॉन्सेप्ट ये तीनटा कॉन्सेप्ट ये कहा द्वारा हेरी हेस का कॉन्सेप्ट जदि मु कहबी कि खाली से जो राइजिंग लिम्ब वाला कॉन्सेप्ट आस्थेनोस्फीयर वाला कॉन्सेप्ट करंट वाला कॉन्सेप्ट कहार ऑथर that is Arthur Holmes and continental drift Alfred any doubt this question is start okay तो आ रिलेटेड क्वेश्चन कौन आस जाय पारे जोटा मु तुमको कहली कि भाई कन्वर्जेंस मार्जिन वेदर इट इज ए कंस्ट्रक्टिव मार्जिन और डिस्ट्रक्टिव मार्जिन जदी कोट गोटे कन्वर्जेंस होची सो कन्वर्जेंस इज ऑलवेज फॉर डिस्ट्रक्टिव मार्जिन इज दैट क्लियर descending limbs related to destructive margin rising limbs is related to constructive margin ठीक अछि ओके दिस इज डन नेक्स्ट इज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी रे आमे बर्तन कोन देखुछे कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग कथा तो देखले सी फ्लोर स्प्रेडिंग रे आमे जस्ट कहले कि हेरियस कोन कहले कि भाई बिकॉज ऑफ से जो आस्थेनोस्फीयर अछि जोटा कि ऑलरेडी हमर ऑथरम्स दे देथिले से कांसेप्ट को से यूटिलाइज कले एंड से कहले कि भाई सी फ्लोर रे जेतले मु आगु आगु बढ़िबी मते लगभग इक्वल रेंज रो मते माउंटेन्स मिली जाउची देन देयर आसला प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ताले प्लेट रो मूवमेंट जो होउची सेटा केमते होउची तो सेठु आसला कि there is word called subduction zone we also call it as a banning off zone or creation of fold mountain the creation of fold mountain में कौन दरकार तो फर्स्ट हमें देखिला कि कॉन्टिनेंट प्लेट टेक्टोनिक तो प्लेट कैन बी आइदर ओसेनिक प्लेट और इट कैन बी कॉन्टिनेंटल प्लेट हां कि नहीं दीटा ही तो क्रस्ट होचे गोटे ओसेनिक क्रस्ट और गोटे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट नाउ द कन्वर्जेंस कैन बी ओसेन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस और ओसेन कन्वर्जेंस और कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस ठीक अछि ना तो बर्तमान मु फर्स्ट कन्वर्जेंस कथा कहूची तो कन्वर्जेंस से तीनटा होय आइदर ओशन कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट ओशन व्हाटएवर इट बी रिवर्स भी पारे ओशन कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट ओशन देन ओशन कॉन्टिनेंट ना ओशन और कॉन्टिनेंट जेतले शब्द माने जेतले करिवे हमें जानि छे हेवी किए ओशनिक प्लेट ये कहबो भाई कॉन्टिनेंट तू सियाडे चले से कहबो कि भाई मु जीबी मु भाई माउंट एलब्रस कि मु होची माउंट हिमालय कि होची मु वेस्टर्न घाट मु याड कोडे जीबी मो पाखरे केते ऊंचा रे अछि तू मते ठेली दबा पे आसु हबो ही नहीं तो सी कहि ठीक अछि तू जदी जीवनु मु हेमितरे भी ओजन मु भितर को पस जीबी तो जेतले ये भितर को पसिवा स्टार्ट करबो हमर हेटी कोन तयारी हबो ट्रेंचेस एठी गर्त तयारी हबो सबुठु डीप जोन से एठी बनेबो बुझियला ना बुझियला नहीं ठीक अछि तो गर्त तयारी हबो दैट मींस तुम मते कह जदी गर्त तयारी कला सेटा एक्चुअली आमो पई पोर्ट पई बहुत भलो हां कि नहीं पोर्ट रिलेटेड एठी गोटे गर्त हे गला दैट मींस गोटे काली गोटे आराम से गोटे बड़ बड़ जहाज आसिक लागि पारियो बट इंडिया परिस्थिति रे सेमिति हो ही नहीं आड जदी गर्त तयारी हला देन देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट गोटे वोल्कानो भी एपटे हबो जना पड़ला कि भाई दिस इज आवर इंडिया रो वेस्टर्न घाट एठी बर्तमान कथा हे गला कि भाई माने ओशनिक प्लेट आसिला एटा कॉन्टिनेंटल प्लेट आसिला ओशनिक प्लेट भितरु पळेला काली वेस्टर्न घाट रे आ गोटे पहाड़ तयारी गला बाबा बुडान मलयगिरी कहूचे मुलायमगिरी से बळे आ गोटे काली ना आसुची एक्स वाई जेड ता ना भी कोन रखिया पड़ुची बुझियो ना बुझियोनी एंड सेठी वेस्टर्न घाट रो से जो अछि एनवायरनमेंट सेटा भी नष्ट हबो बिकॉज़ लाभा बाहरियो भाई ठीक अछि तो हेतरे जो तमे एंडेंजर्ड क्रिटिकल एंडेंजर्ड की एक्सटिंक्ट वाला एगुडा तो आहुरी लिस्ट बढ़ी जिवो एनीवे फाइन नाउ
फोल्ड माउंटेन द कांसेप्ट ऑफ फोल्ड माउंटेन काहेकि फोल्ड माउंटेन मु कहली बिकॉज जदी ओसेनिक क्रस्ट आउ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मु तुमको कहली ना ये ऑलरेडी भितरु को बसी माने एठी गोटे प्रेशर क्रिएट करिवो एंड सेठी बनेबो मोर फोकस लागी मोर एपिसेंटर बनिवो अर्थक्वेक हबो करेक्ट बट बिकॉज ऑफ फोकस सेठी जेहेतु माने पसिचंदी भितरे देन एठी बहुत सारा अमाउंट रो एक्स्ट्रा जिंस पळे आसला एंड से माने ताती की से माने ट्राई करबे गोटे तांको गैप मिलिया पय गोटे फॉल्ट मिलिया पय गोटे दरार मिलिया पय जेतले ताको दरार गोटे मिली गला से माने फटै देकी पत्थर तो मेल्ट करे दै चलिए करे कि से माने कोन करे ऊपर को उठी आसीबे एंड से माने हिजबे वोल्कानो सो देयर विल बी फोल्ड माउंटेन वोल्कानो रो ही तयारी हिजबो फोल्ड माउंटेन तयारी हबो ब्लॉक माउंटेन हबोनी ब्लॉक माउंटेन से मिड ओसेनिक रिड्स रे जो माउंटेन ओडा थिबो सेगुडा ब्लॉक हेकी थिबे ताकू तमे ब्लॉक माउंटेन कहि दबो बट एठी जो माउंटेन ओडा तयारी हबो बिकॉज ऑफ ओशन आउ कॉन्टिनेंट रो सॉरी ओसेनिक क्रस्ट आउ कॉन्टिनेंट रो कन्वर्जेंस रे तुमको कोन देखा जिवो फोल्ड माउंटेन ओके एंड फोल्ड माउंटेन बाय कंडीशन कोन at least one plate has to be continental and one plate has to be oceanic. Is that clear? volcano by continuation कोन ना at least one plate has to be oceanic. भाबी न तमे भाबो एटा continent केही तळु को जिबे ही नाही देन volcano केंदी हबो volcano हवा में हेले केही तो तळु को जिबा दरकार नाही भीतर प्रेशर आस्तेनोस्फियर रे प्रेशर क्रिएट करिया पई केही जाउ ही नांदी ये कहूची मु भी हलिबिनी से कहूची मु हेबिनी ताले बाडे हे जिवा ताले गोटे के ऊपर को उठिबो भितरु के जिबेनी that is the situation in continent जोटा कि हमें हिमालय पर्सपेक्टिव कथा कहूचे देन एठी से माने हिमालय वाला ऊपर को उठी चले राइट बट वोल्कानो हवा पई कोन दरकार गोटे प्लेट ओसेनिक हेले ही से तळु को जिवो जदी काली मु कहबी कि देही दीटा कंटिनेंट अछि वोल्कानो हबो कि नो सर हबनी दीटा ओशन अछि ओसेनिक प्लेट वोल्कानो हबो ना हबनी यस सर हबो वोल्कानो हबो एंड तार नाम आइलैंड दे परिबी तार नाम सी माउंट दे परिबी बुझी परछना बिकॉज़ से गोटे जगह उठिबो ना तो काली जदी समुद्र पानी ऊपर उठी गला ताले आइलैंड जदी समुद्र पानी भीतर रही गला समुद्र सरफेस ऊपर उठी पारलानी देन सी माउंट या फिर पूरा ऊपर को उठिला देन इरोड हे की पूरा समुद्र पानी लेयर सहित लागी गला देन बुयोट कोरल रीफ्स वगैरह लागी गला देन ताना कोरल रीफ्स ओके कोरल रीफ्स ओके फाइन देन व्हाट अबाउट ट्रेंच तो ट्रेंच पाई भी मते कोन दरकार जने भीतर को जिबा दरकार किए भीतर को जिबा जे ओजनी हबो आ कंटिनेंट रे ट्रेंच हबोनी हबो की काली जना पड़ला कि इंडिया रो माउंटेन रेंज जाय कि नेपाल सहित बाडे हे गला हेटी गोटे गर्त हे गला हबो की गर्त हबोनी सेठी कबे डिप्रेशन मु जो गोटे देइथली आर्फर रीजन रे डिप्रेशन हला दनकिल डिप्रेशन तमे मते को ता पाखरे समुद्र अछि बोली हला ता माने कोन निहाती गोटे ओशियनिक प्लेट रहिले सेठी डिप्रेशन हवार सिचुएशन अछि सेठी ट्रेंच हवार सिचुएशन अछि पूरिल ट्रेंच मने बका पूरिल मु आगु करेबी डिफरेंट ट्रेंचेस गोडा तो से ट्रेंचेस गोडा तमे केबे तळ भागरे पाइबोनी काहेकि तळ भागरे पाइबोनी बिकॉज़ कंटिनेंट जदी कन्वर्ज हेबे से माने ट्रेंचेस देबे ही नहीं दैट मींस ट्रेंच पाई मिनिमम तुमको कोन गोटे प्लेट दरकार ओसेनिक प्लेट एटी डाउन ठीक अछि ट्रेंच पाई दरकार ओसेनिक प्लेट वोल्कानो पाई मिनिमम गोटे ओसेनिक प्लेट अर्थक्वेक पाई सेमिति किसी कंडीशन नाही भाई अर्थक्वेक इज ऑल अबाउट भाई टिके फ्रैक्शन बड़ा बड़ी हे गले देन वाइब्रेशन हबो से वाइब्रेशन लागी एस वेव पी वेव चलियो सरफेस वेव चलियो सो अर्थक्वेक पाई तमे खाली बड़ा बड़ी हे जाओ दैट इज एनफ राइट सो अर्थक्वेक तो सब केस रहबो इज दैट क्लियर ओके so convergence ru asila गोटे concept कोन ring of fire it is not only by convergence even in case of divergence also ring of fire ही पारे जदी मिड ओसेनिक रीज माने फॉर एग्जांपल जो रीजन रे होती से रीजन रे जना पड़ला कि लाभा आसे तो डाइवर्जेंस पे भी ही पारे not only because of convergence it can be also divergence so convergence देखिले डाइवर्जेंस हमें देखिबा देन गोटा होजे ट्रांसफॉर्म कोने कोन ना एपट गोटे प्लेट अछि एपट गोटे प्लेट अछि ना कि भीतर को जाउची बड़ा बड़ी हे कि ये एपट माने राइजिंग लिम्ब होउनी कि डिसेंडिंग लिम्ब होउनी होउची कोन ये एपट को मूव करूची ये ता सहित घसी हे कि पैरेलली एपट को मूव करूची बुझियला ना बुझियला नि ना कि तळु को जाउची सी तळु को केतले जीव ना जदी यार मूवमेंट एपट को थांदा आर मूवमेंट एपट को थांदा जदी दिटा ओसेनिक क्रस्ट कि गोटे तळु को पळेबो जदी दिटा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कि गोटे ऊपर को उठिबो हं कि नै दिटा जदी कॉन्टिनेंट ऊपर किंतु जदी एमिति मूवमेंट न होय कि गोटे मोर मूवमेंट से पड को गोटे मूवमेंट एपड को या फिर दिटा को मूवमेंट से पड को खाली जस्ट घसी ही जाउछंदी दैट इज व्हाट वी कॉल ट्रांसफॉर्म फॉल्ट ओके ट्रांसफॉर्म ओके कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस एंड ट्रांसफॉर्म ओके फाइन नाउ कमिंग टू दिस कि सैन एंड्रियस जोटा कि होची गोटे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री एंड सेठी भी वोल्कानो होची ट्रांसफॉर्म बाउंड्री रे भी वोल्कानो होची दैट मींस किछि पोर्शन तो अछि जो पोर्शन टाके ता तळु को से माने जाउछन सी ट्रांसफर तो होउची
एथिरे जो घसी होउची एटा गोटे बाउंड्री एटा गोटे बाउंड्री ए दिटांग दि जनक भितरे घसी होउचदी ये पट को जाउची ये पट को जाउची देन एठू किछि पोर्शन जोटा तळु को जदी पसी गला समव्हाट ताले सेठी गोटे खाली ये एक्सेप्शन रे मन रखिता कि सैन एंड्रियास जोठी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बट स्टिल ट्रांसफॉर्म बाउंड्री मते वोल्कानो मिलुची एंड कथा होची एठी वोल्कानो सेतिकी बेले मिलिबो जेतले गोटिए प्लेट तमरो ओसेनिक प्लेट हेजवा निहारी दरकार लिम्ब हंगे नै एस्थेनोस्फियर रे बिकॉज ऑफ राइजिंग लिम्ब डाइवर्जेंस जदि राइजिंग लिम्ब रे डाइवर्जेंस होची तमको एठी कोन कोन मिलिबो ना गोटे रिफ्ट वैली मिलिबो देन मिड ओसेनिक रिड्स मिलिबो सी फ्लोर स्प्रेडिंग मिलिबो एंड तुमको ब्लॉक माउंटेन तयारी हो दैट मींस कन्वर्जेंस रे जदि तुम कहू फोल्ड माउंटेन रो पॉसिबिलिटीज अछि डाइवर्जेंस रे तमरो पॉसिबिलिटीज कहारो ब्लॉक माउंटेन रो इज दैट क्लियर ओके देन शैलो डेप्थ अर्थक्वेक ऑब्वियसली नो डाइवर्जन हो गला बर्तन ताकू पूरा विराट बड़ जागा मिली गला देन सी काहे कि भाई प्रेशर लगेबो बुझियो ना अर्थक्वेक रे अधिक अधिक जते प्रेशर बनिवो अर्थक्वेक जते अधिक प्रेशर बनिवो अर्थक्वेक सेते हेवी हबो किंतु जदि संपूर्ण ताकू गोटे गैप मिली गला से भीतर जो लाभा अछि से आसी के गैप रे बसी ही जीवो देन ताकू काहा को चिरी फटेबार नाही करेक्ट नो कि भाई मते जगह दियो से गुडा कहिबार नाही ताकू ठेला पेला करिबार नाही बाबू न गोटे बस अछि बस रे केही लोक नांदी मझिरे तमे आराम से चली जीवो ना लोकन को देहर धक्का हबो कि हबनी तमे किंतु जदि बस रे जगह ही नाही ओहलिया को पडुची देन धक्का मारा मारी करी कि देन गोटे लोक को धक्का मारला से आ गोटे लोक ठिबार जणा पडला कि जे बसिची ता ऊपर भी तीनटा लोक पहिले सेटा केतेले हबो जेतले तम बाहर स्पेस ही नाही दैट मींस सेटा सेतिकी बेले हबो जेतले तमे भीतर ही पसी जाइछो कन्वर्जेंस केस रे डाइवर्जेंस केस रे हबो ही नाही दैट मींस सेति हमें कोन लिखलेठी शैलो डेप्थ अर्थक्वेक जदि मु कहबी कि डीपर अर्थक्वेक ताले सेटा को केस रे हबो बिटवीन कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस रे कन्वर्जेंस रे मते डीपर वाला अर्थक्वेक मिलिबो जदि मु ताको रिचर स्केल रे मैपिबी मते से 7 हेपटे ही मिलिबो एंड शैलो डेप्थ रे मते कोन मिलिबो ना मे बी लेस देन 5 बुझा पडुची ना बुझा पडुची okay then there is something called volcano जो थरे हमें कहते फिशर इरप्शन हो फिशर इरप्शन कि volcano जो बाहरियो आराम से बाहरियो किछि प्रेशर दबार नाही आ गोटे होची ताको volcano देखिबा कि भेंटा जदी चापी जाइयो से पूरा फाउंटेन होलिया बाहरिया स्टार्ट हो करेक्ट नो तो से भलिया सिचुएशन एठी होबार नाही एठी कोन होबो बिकॉज़ तम पाखरे ऑलरेडी स्पेस अछि तमे आराम से आसी कि से स्पेस रे बसो ना तम पाखरे एठी ऑलरेडी बिकॉज़ ए प्लेट एपट को पड़िछि ए प्लेट एपट को पड़िछि एठी तुमको गैप अछि से गैप रे आसी तमे बसी जाओ okay then it is a constructive margin divergence means constructive margin formation of plateau new sea river or lakes etc एगुडा सब हबो कोथि बे तमरो डाइवर्जेंस लागे बिकॉज़ तुमको गैप मिलुची ए गैप रे तमे किछि ना किछि तयारी कर दबो किंतु एठी कोन होची सबडक्शन होची एठी डिस्ट्रक्शन होची एठी किछि नियो जिंस तयारी हबो जहा तयारी हबो एपटर कॉन्टिनेंट रे गोटे पहाड़ तयारी हबो लेक हवार चांस ही नहीं बुझियला ना डाइवर्जेंस okay so mid oceanic ridge हबो then there is something called host जो block mountain हमें कहजे block mountain रो ऊपर पोर्शन ता को कहजे host and तळ पोर्शन ता जोटा ताको कहजे graben host and graben वाला रो फॉर्मेशन then coming to transform boundary तो transform boundary केतला हबो ना जेतले parallel movement हबो कोन हबो movement जेतले parallel थिबो it is a conservative boundary neither constructive boundary neither destructive boundary but what it is conservative boundary momentum conserve हैला दैट मींस कोन कि जणक पाखरे मोमेंटम थिला से जणक आउ जणक दिया गेला मोमेंटम रो कोनोसी लॉस होवार नाही ये स्पीड रे जति जाउतला m1 v1 = m2 v2 करेक्ट नो से तम फार्मूला लगाओ ना साइंस रे m1 v1 = m2 v2 गोटे मास से किछि गोटे वेलोसिटी रे दिला देन आर किछि गोटे मास देन आ को जो वेलोसिटी मिलयो सेटा भी ई m1 v1 रो मिलयो मोमेंटम कंजर्व होला कोनोसी एनर्जी किछि लॉस होवार नाही तो याकू भी सेमति कोन कहउची ट्रांसफॉर्म बाउंड्री इज इक्वल टू कंजर्वेटिव बाउंड्री ना डिस्ट्रक्शन होउची ना कंस्ट्रक्शन होउची then it is also called shear plate lagi logi ghosi asi right then there will be earthquake by ghosio mane continuously भाबु न तमे बस रे जाइतो then गोटे लोक continuously तम से तो धक्का होतो घसी धक्का आगु बड़ी जा ट्राई करतो तो earthquake तो हबो intense वाला earthquake हबो mid oceanic ridge will be perpendicular to the transfer boundary काहेकि बिकॉज़ एमाने एमिति जाउछन तो ट्रांसफर बाउंड्री टा एमिति जति हबो मिड ओशनिक ग्रिड्स ता केमिति हबो मिड ओशनिक ग्रिड्स होआ पई हेले तमकु दरकार कोन एमाने सेपरेट होवा दरकार करेक्ट नो दैट मींस मिड ओशनिक ग्रिड्स ए भलिया चलिबो कि भाई तमे गोटे स्पेस दियो हमकु ताहाले हमें मिड ओशनिक ग्रिड्स तो मिड ओशनिक ग्रिड्स विल बी परपेंडिकुलर देन देयर वोंट बी एनी वोल्केनो एक्सेप्ट सैन एंड्रियास काहेकि वोल्केनो हबोनी बिकॉज़ के भीतर को ही जाउ ना बुझियला ना ट्रांसफर बाउंड्री एनी डाउट conservative boundary constructive boundary destructive boundary we call it as convergence divergence and transfer
ए तीनटा रे केहार किछि डाउट अछि कि क्लियर okay now these are the plates India रा important plates let's complete it and we will complete for today so first is Eurasian plate Europe ଆଉ एशिया से प्लेट को आमे कोन कहि देले यूरेशियन प्लेट तो मेजर प्लेट ओडा करेक्ट नो वर्तमान सिचुएशन रे आमे ऑलरेडी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी करे ना तो ता अनुसार आमे देखिबा कि व्हाट आर द मेजर प्लेट्स तो मेजर प्लेट्स रे कोन कोन आसला गोटा होजी यूरेशियन प्लेट जो यूरेशियन प्लेट रे गोटे मु कहूची गोटे पट साइड रे यूरोप अछि आ गोटे पट साइड रे एशिया अछि एशिया पाखरे इंडिया अछि होंगी नहीं तो इंडियन प्लेट तो गोटे यूरोशियन प्लेट मु जानिली भाई यूरोप एंड एशिया यूरोशियन प्लेट देन इंडियन प्लेट इंडिया सहित लागि छी किए गल्फ कंट्रीज अरबियन ईरान इराक देन सेपटे जदि तमे जो साउदी अरेबिया तो दैट इज अरबियन प्लेट बुझिला ना बुझिलानी तो ए पाखरे जो प्लेट अछि ताकू मु को कहबी अरबियन प्लेट देन ता तळकू मते मिलिबो अफ्रीका रो प्लेट देन एपटे ऑस्ट्रेलिया अछि ऑस्ट्रेलिया प्लेट ए मझरे फिलिपाइंस अछि जो हमर इंडोनेशिया फिलिपाइंस थाईलैंड मलेशिया तो एटा को मु कहि देली कोन फिलिपाइंस प्लेट देन नॉर्थ अफ्रीका प्लेट नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका प्लेट एतिकी तो मेजर प्लेट सो मेजर प्लेट जदि मु कॉन्टिनेंट हिसाब रे कहबी कोन कोन मु जानली गोटा होची यूरेशिया गोटा होची अफ्रीका यूरोप और एशिया को कंबाइन राइट बिकॉज़ माने मिसी कछन ना एठी उराल माउंटेन लागी खाली सेपरेट हिचन बट प्लेट तो गोटी है ना हंगी नहीं राइट देन अरबियन प्लेट सऊदी अरेबिया वाला रीजन से जो गल्फ वाला रीजन अरबियन प्लेट अफ्रीकन प्लेट ऑस्ट्रेलिया प्लेट एठी गोटे आसिला जो छोट छोट आइलैंड गुडा हिक अछन से मानु फिलिपाइन प्लेट रे नै गले देन नॉर्थ अमेरिका प्लेट साउथ अमेरिका प्लेट नाउ अंटार्कटिका प्लेट होची तळे आउ छोट छोट प्लेट गुडा कोन ना नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका रे एठी गोटे कैरिबियन सी अछि तो सेमे गोटे आसी गला कोन कैरिबियन प्लेट एतिके टिके प्लेट मन रखिया पड़ो ठीक अछि देन जुआन दे फुका प्लेट एटा कहा पाखरे ना तमर कैलिफोर्निया पाखा पाखी एरिया रे अमेरिका रो वेस्टर्न साइड रे जुआन दे फुका प्लेट मन रहइबो ठीक अछि देन जदि मु साउथ अमेरिका कहबी देन एपटे साउथ अमेरिका लगभग कोलंबिया पाखरे जो प्लेटटा कोलंबिया रो राइट साइड रे कैरिबियन प्लेट कोलंबिया रो लेफ्ट साइड रे मते मिलियो कोकोस प्लेट कोन कोकोस प्लेट आउ तळु को साउथ अमेरिका पेरू पाखा पाखी जो रीजन टा मिलियो मते को मिलियो नाजको प्लेट कोन नाजको प्लेट नाजको एंड ऊपर मिलुची कोकोस आउ नाजको आउ बाकी तो भाई पैसिफिक ओशन तो पैसिफिक प्लेट जोटा कि गोटे ओसेनिक प्लेट करेक्ट नो ओसेनिक क्रस्ट आउ गोटे मते एपटे मिलुची स्कोशिया प्लेट स्कोटिया और स्कोशिया जहां भी तुम कहो सो ओसेनिक प्लेट जदि तुम देखिबो सी एथरु त माने मते तुम कुह इन बिटवीन दिस व्हिच आर कॉन्टिनेंटल प्लेट व्हिच आर ओसेनिक प्लेट यूरेशिया पूरा कॉन्टिनेंट इंडियन प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट अरबियन प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट अफ्रीकन प्लेट कॉन्टिनेंटल ऑस्ट्रेलिया आल्सो कॉन्टिनेंटल फिलीपाइंस कॉन्टिनेंटल नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंटल साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंटल बट कैरिबियन ओसेनिक जुआन दे फुका ओसेनिक कोकोस प्लेट ओसेनिक नाजको प्लेट ओसेनिक पैसिफिक प्लेट और स्कोशिया प्लेट ओसेनिक वर्तमान मते को जदी मते ओसेनिक और कॉन्टिनेंट मिलला वोल्कानो कोठी मिलिबो ए रीजन रे वोल्कानो मिलिबो ए रीजन रे वोल्कानो मिलिबो ए रीजन रे वोल्कानो मिलिबो देन जदी ओसेन ए भितरे माने बाडे गले ए रीजन रे मते वोल्कानो मिलिबो मिलिबो ना मिले देखो कि सान एंड्रियास फॉल्ट एठी अछि दिस इज ए ट्रांसफॉर्म बाउंड्री but there is a volcano because it is having a oceanic plate on this side and continent plate on the other side right तो जोठी ओसेनिक प्लेट वगैरह रहिबो सेठी तो तमरो बाउंड्री रे तुमको वोल्कानो देखा जिवो तो जोथि बेंगी से माने जदी मारी चंदी ए सब जिंस दिस इज द रिंग ऑफ फायर वाला रीजन जो गुडा से कहउ चंदी तो एठी होउची कोन एक्चुअली तो देखो इथरे तमर देछि कोन कन्वर्जन बाउंड्री ट्रांसफॉर्म बाउंड्री एंड डाइवर्जन बाउंड्री am I right तो ए इमेज टा को टिके भल से देखि देथो मु जस्ट तुमको तो खाली कहि देली कोन प्लेट ओडा यूरेशियन प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट अफ्रीकन प्लेट अरबियन प्लेट देन नॉर्थ अमेरिका प्लेट साउथ अमेरिका प्लेट एंड एटा तो यूरेशियन प्लेट वाला देन एटा होची इंडियन प्लेट ऑस्ट्रेलिया प्लेट जदी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट मिसे की कहबी देन दैट इज ए ओसेनिक प्लेट ओके देन एपटे अछि तमरा फिलीपाइंस प्लेट एठी गोटे जो तमरा ओसेनिया पॉलिनेशिया राइट से सब पई गोटे हमें कहूचे कैरोलिन प्लेट राइट एलुसियन ट्रेंच गोटे तो ट्रेंच केतेला हबो गर्त केतेला हबो तमरा एठी कुरिल ट्रेंच वगैरह अछि जेतले गोटे जिंस भितरु पसियो होंगे नहीं तो भितरु के पसियो ऑब्वियसली ओसेन थिबा दरकार हमारे ओसेनिक क्रस्ट थिबा दरकार राइट ओके फाइन देन जुआन दे फुका प्लेट कोकोस प्लेट नाजका प्लेट कैरिबियन प्लेट तो नाजका प्लेट कोकोस प्लेट आउ कोकोस प्लेट आउ कैरिबियन प्लेट एमान तो प्योरली ओसेनिक स्कोशिया प्लेट प्योरली ओसेनिक राइट देन आउ बाकी मझरे तमन चलते कोन एगुडा होजे डाइवर्जन बाउंड्री दैट मींस डाइवर्जन बाउंड्री माने ये सब जगह रे तमु कोन मिलिबो मिड ओसेनिक रीड्स मिलिबो होंगे नहीं
भाई जहाज लेके जीव माने पिटी ही जाई पारो यू नेवर नो राइट सो दिस इज मिड ओशनिक ग्रेड्स बट ए सब एरिया कॉन्टिनेंट आ ओशन पाखरे तुमको मिलियो कोन वोल्कानो ओके एंड वोल्कानो मिलियो माने कन्वर्जेंट बाउंड्री मींस वोल्कानो मिलियो कन्वर्जेंट बाउंड्री हबो ही तमरो कॉन्टिनेंट आ ओशनिक क्रॉस रो बाउंड्री लाइन उडा करे एठी किछि मिलियो तुमको ए एरिया रे एठी किछि अछि देन एठी होची कन्वर्जेंट एठी कोन होची कन्वर्जेंट एठी तो वोल्कानो होनी तमे सुनिছো केबे हिमालय रे वोल्कानो हला वालिया आर्थक्वेक होची काहे कि कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस कन्वर्जेंस होची कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट होची तो हेठी वोल्कानो तो हबनी हबो कोन earthquake